Good morning. Welcome to the third day of the training program, that is 3rd of August 2016 and Wednesday morning. And today, before starting the session, I would like to know that are the Noodle centers able to hear to my voice? So, Deepika, can you help me? Which are the centers connected today? First one is MIT. Kanwar Satyavira College of Engineering and Management. Okay. Are you? They must be listening us. Okay. You are getting our voice. I would like to have a. Please wave your hand if you are getting our voice. Kanwar Satyavira College. Audio video. We are not listening, but they are getting ours. Sure. For sure. Okay. Then next we come to the next colleges. Our next college. Balaji, a group of institutions. Can you give me a list, Hannah? Yes, sir. We are getting the voice of you. Hello. Okay, Shri Balaji College of Engineering and Technology, Jaipur. Are you getting my voice? Yes, we are getting your voice. Okay, thank you very much. Then MIT College of Management, Muradabad, Uttar Pradesh. They are not connecting today. Kanwar Satyavira College of Engineering and Management. I hope they are getting our voice. We are not able to get their audio and video, as explained by my technical team at my end. Then Global Institute of Technology. Okay, this is Kanwar Satyavira and Global Institute of Technology. Yeah, we are Okay. able to view. Okay, thank you very much. And SGT University, Gurgaon. Okay, you are getting our voice. Okay. Okay, there is a query that where are your participants? They I feel so. The camera is on that side, but they are having the participants on there. Okay, thank you very much. We have all the Noodle centers connected to us. One or two Noodle centers, they are able to get our awareness its role in improving the efficiency in educational institutions. So, first, starting from outline of this presentation would be, first we would attempt to understand what is e-governance, then why e-governance, then we will take up a few examples of e-governance implementation in different scenarios. Then we will go for a e-governance framework, how we have to go for initiating the structuring of the e-governance planning for your institutions. Then we will move up to the conclusion in the end of the presentation. So before SGT University, Gurgaon, Haryana, what is your understanding of e-governance? What e-governance is? SGT University? Sure. Haji, welcome. So as far as my opinions are concerned, like we have so many projects running by IIT Bombay, like we have NME ICT, National Mission on Education to ICT, and there are some other projects which are governed by e-governance method. We are helping the society, we are helping the Indian people and other students as well. So as far as my opinions are concerned, this is the way we run e-governance. I mean, running by government of India. That's it. What what is your understanding of e-governance? Balaji College of Engineering and Technology. Any participant from that Noodle Center?
Hello. Sure. Welcome, sir. Hello. Haji, we are getting you, sir. Sir, from my point of view, it is a way to deliver the government services to a different places. Okay, perfect. Using ICT through electronic mode. Yeah, Okay. using ICT. Okay, thank you very much. Then we come to next college. MIT is not connected. Kanukava is not able to listen to us. Then Global Institute of Technology, Jaipur. Global Institute of Technology. Yes, e-governance from my point of view is a governance through electronic services we are providing, and it gives us a facility to a normal person to get touch with the government. Now Modi government is putting very much effort into that by Digital India campaign, MyGov portal. So through this electronic governance, ease is given to the end user or the customer, or we can say the normal human beings. Thank you. Perfect. Thank you very much. So with this, I have got a fair view of what e-governance is and what is your understanding. You are close to that. But since I have conducted our training programs that are specifically focusing on e-governance for 1 week, so it will not be feasible to cover all the aspects in one session. But here we would go for a conceptual understanding of how things can be evolved in context of e-governance. If any institution wish to go for a full-fledged or a partial implementation of some e-governance initiatives in their institutions. So the basic motive of this session would be to provide a conceptual point of view and to provide a different kind of frameworks, different kind of activities that are necessarily to be undertaken in context any organization wishes to go for a e-governance. So we will be taking that example. I will be taking examples. One example from a state government implementation of an e-governance initiative that is being implemented by the government of Punjab for e-governing different schools under the state of Punjab using e-governance mode. Then I would take some aspect of technology adoption that I have evolved through the review of literature when I was doing my PhD coursework. So how that adoption, what are the different adoption models and why they are important while planning an e-governance system. Then we will review some of the documents, some glimpses, not all the documents, some relevant paragraphs, pages, extracts from the different documents are available on the Government of India portals, maybe Department of Electronics and Information Technology, maybe from the Digital India program we were saying. So we will look at those perspective, and I would try to establish a rough linkage how those things evolved. So that if you are a starter in context of e-governance, what kind of preparation we will be needing at our end to initiate the kind of e-governance activities in our institutions. So with this motive, I start with my presentation. So first one is, when we say we got a fair view from some of the participants from two or three of the nodal centers, what I got from you, one perspective is clear. It is the delivery of government services or services by the government to its citizen through using information and communication technology peripherals by using electronically using internet. So when we say this definition, this is a right definition. This is there is no doubt about it. But when we say this is one, I consider this as a one special case of e-governance. When we say e-governance, it is a combination of two words: e, electronic, plus governance. So when we say e-government or we say e-governance, that the definition we have evolved just is the definition of e-governance from point of view of the government, means say Government of India, what they are using ICT to provide services that should be provided to our citizens in a timely, transparent, without any corruption, without any intermediation, in a faster way to its citizens. But when we talk of e-governance in general, e-governance can be implemented to any level. E-governance can be done for an, I would say, a sweet shop. E-governance can be done of a
I would say your basically educational institution, e-governance can be done by maybe implemented by a private company, maybe a small one, maybe a large one. So when we take e-governance definition in journal, it is just the provisioning of services by the organization. Organization may be a body, may be a government, it may be a private, it may be a private company, it may be a public limited company, it may be a educational institution. It is a provisioning of the services by the organization to its stakeholders. We term it in journal as stakeholders. In terms of citizens, we use the term word stakeholders using ICT and electronic media or internet, using internet and ICT peripherals or electronic peripherals. So first thing we have to make in our mind clear that e-governance is a broader concept in which e-governance in context of government is one special case of that. So when we would like to have a definition of e-governance. E-governance is the transformation of governance with the help of information and communication technologies in a crisp way. But if we define in terms of government, we have discussed, it can be defined as the civil and political conduct of the government, including service provisioning using information and communication technologies, just as we have discussed. And but if we see it from a implementation point of view, practically we have to implement. E-governance is a technologically intensive activity requiring a high degree of specialized skills, including both domain knowledge and the technical skills. Means if you have to practically implement a e-governance project, we will be needing many technological persons with different skill sets, and we will be needing a persons who are having a understanding of the system analysis and design, policy making, strategic planning, as we have discussed in the first 2 days. As Dr. Dhumeja must have highlighted those. So we will review this one by one in the next slides. So why e-governance? Can anybody share why do we need e-governance? Why can anybody foresee what can an e-governance initiative role be played in your institution? If you implement a e-governance initiative in your technical institution, in your college, in your polytechnic, what benefits can you assume, or what kind of initiative you can have? Can any university who has started on provisioning of using ICT for their for provisioning services for their stakeholders? Any example? Or if not, what you have planned? Have you planned anything? Any university would like to share? SGT University, Gurgaon. Any e-governance initiative you have planned in your institution, or you are foreseeing in your institution? SGT University, Gurgaon. Are you with us? SGT University. Yes, sir. Sure, we are getting you. Yes, sir. Yes, we are getting you. Yes, sir. Any e-governance initiative you have designed in your institution? Any module? Sir, please repeat your question. My question is, you are requested to share any e-governance initiative you have implemented in your university. Sir, actually not in a very detail, but as I earlier told that we are running IIT Bombay project. Okay. Okay. That is open tutorial. Okay. So that as it is supported by the government of India. Okay. Okay. So perfect. Apart from it, any in-house e-governance initiative, for example, you have a. I will later on provide the example. I wish to have example, for example, for provide online deposit of fee for your students, or say e-approval system. yeah, definitely, sir. Our students submit the fee online, sir. That's it. You have linked it with your plan in-house. Students to submit the fees online, sir.
Then they can take the admission online. Perfect. Thank you. Then we come to the next college, Shri Balaji College of Engineering and Technology, Jaipur. Any initiative, e-governance initiative you have undertaken of any kind? Apart from the normal? Not exactly, sir, but we are having a virtual lab in our campus that is conducted through IIT Delhi. And the limited resources that only IITs can have, we can also use Those. them by, yes. Using that. Perfect. Then we come to Global Institute of Technology, Jaipur. Hello. Hanji, well, very good morning, sir. Good morning, sir. Actually, the same process, the fee and the admission process is online. Perfect. Both basic initiatives you have launched. Okay, thank you very much. So we move forward. If we see the benefits of different kind of e-government governance services, in context of e-government, it is termed as effective and efficient delivery of services by the government to the citizen. It provides access to the information to empower citizens. It enables their participation in government and enhance citizens' economic and social opportunities so that they can better their lives, make their life better, and for the next generation. So here I would specifically narrow it down to the technical institutions. Examples for technical institutions. For example, we have one institution in Punjab that designed a e-approval system. For example, they have come up with a wonderful initiative. For example, as a teacher, you have to go for you have to conduct a certain training program, or you have to conduct a certain, say you have to go on a certain tour, and you have to take certain advances, TAD advances, approvals from HOD, approvals from the director, higher authority of the institutions. So what they have come up with is they have designed a e-approval system. They have designed in such a way, for example, Amardev has to be on a tour for conducting a training program at, say, Bathinda. So I will upload that my request application on a portal online in a initiative, in a login ID that is assigned to me, and that login can be viewed by the HOD, concerned HOD. Then if the HOD approves it, it will automatically become visible to the higher management authority. Say head of a school, maybe your director, maybe your vice chancellor, who is the designated authority in your area. So once he approves it, that online approvals completes, so automatically that application can be viewed by the person in the finance department. I can submit my TADA request, and automatically it will be issued to me. So there is no need for me to go physically to head of department for say for approval for a training program. There is no need after having approval of HOD or HOD move to the cabin of director or vice principal for this kind of approval. So automatically they have saved a lot of time in that. In case of NITTR, still it is not geographically spread very wide. But in case of engineering colleges and deemed university, where the your campus is maybe 15 acres, 20 acres, 50 acres, 60 acres. So moving from one department to another department consumes a lot of valuable time of the faculty and head of departments. So they have implementing this e-approval system, they have saved the time of their faculty, their head of department, that can be used in other valuable activities for the institutions. Another example can be, for example, we take a system of Lovely Professional University. This is a private university. So when we say when I last visited that, I found that they must be operating more than 70 buses. They are operating more than 70 buses to bring students from the geographical separation of around 80 to 100 kilometers to the university in the morning, and leaving the students back in the evening with the same distance. So what happens if a student misses one bus, or if some bus is not going to the college on a particular, going to the university on a particular day, if there is some technical snag in the bus,
So what they have come up with, they have planned for purchasing equipment. They have come up with kiosks. Those kiosks are placed at different centralized locations in the university. Since it is a more than 600 acres university, so more than 25,000 students studying over there. So we can assume the kind of audience they are dealing with. Only the student strength is 25,000. Faculty strength is, if I am not wrong, 4,000 to 5,000, and other workers' strength is, staff strength is 10,000. So they are having approximately 40,000 people on board on a particular day in the campus. So how do they manage? They have placed those web kiosks at different centralized location. Any person can use those kiosks to search the routes, on which route, for example, Jalandhar to Pathankot, which are the buses, from where they will leave, and what is the number of those buses. So you can see the your travel schedule. You can plan your travel accordingly based on that information. So that is another advanced level initiative that a university has taken. Then we will come up with certain other initiatives as we move forward in our presentation. Okay, what should framework be about when we say e-governance? A plan for the development of e-governance specifying, among other things, it should have the vision, at what level you see your e-governance initiative to be. You wish your e-governance initiative to be at the starting level or at the advanced level. Then you should have a mission, or then to achieve those missions you should have goals, milestones. Then to achieve those goals, milestones, you should have concrete initiatives or activities, priorities, challenges, and enabling policies for the e-governance agenda as a whole. Yesterday I discussed one of the group tasks with you that has to be completed by the participant at different nodal center, that included 3 parts, part A, B, C. That part A was regarding your stakeholders priority. Part B was regarding your setting your vision. Part C was setting your mission. So if you set e-governance as one of your technology, as one of your vision, element of your vision, then accordingly you will have mission, and accordingly you will have activities, priorities, and challenges and policies. So the framework should address to all these elements. So a strategic planning process, in context of, if we talk of strategic planning process for an e-governance initiative, major steps should include assessing e-governance readiness. First one is whether your people, your organization, you as a member of the top management are ready to go for e-governance in your college, for making certain initiatives of your organization online. So first you have to have a basic discussions, stakeholder discussions among yourself, forming groups at different times, or it can be in the form of a questionnaire you discuss amongst the top management. Then you come up with a questionnaire, you get the responses filled from your employees, from your students. You have to first make a survey of your available infrastructure, available technical support, available human resource with you. That is, you have to assess your e-governance readiness. Then elaborating the vision and expected contribution. Then second step is that you have to envision. For example, yesterday in the task I explained, you have to envision yourself after 4 years from now, where you would like to place yourself after 4 years, and what would be the expected contribution of the initiative you would like to undertake. Then you have to formulate strategic goals, then determine required interventions, then you have to set the objectives. How is it helpful? Some examples are there, just as we have highlighted 2 examples, e-approval and web kiosk system for knowing the transportation schedule. So here, how is it can be helpful? Some other examples are there. A fully web-based student facilitation framework to the universities and their affiliated colleges and recognized institutions. If you are able to do it, so a lot of your time will be saved in terms of certain documents you have to send physically your representative to the university, or as a university you have to have a certain key persons coming from colleges to submit the results, to bring the marks, to submit different kinds of examination papers. Then it has to be submitted back to, results have to be given back to the universities. So
that can be done online to meet the growing aspirations of the students at low cost, with high quality, with high speed, with widest accessibility, with mass personalization. For example, once a student pass out for a provisional degree, for getting a provisional degree, or for getting a character certificate, or for getting a final degree, they have to first get an NOC or some kind of letterhead on certifying that this person has completed successfully completed BTech from our college. Then he has to take that letter to the university, and based on that letter, university has a one performa where he has to fill in, submit certain fee. Then he has to after 7 days, 15 days time, he will get a time, and after that he has to go to collect the provisional degree. So can the submission of those basic documents be made online, so that he has to travel only once to the university, that may be 100 kilometers from a college, 150 kilometers from a college, or from the residence of a student, so that he has to travel only once to take a provisional degree or a final degree. So to meet the growing aspirations of the students. Third, can seamlessly integrate with other frameworks like college directorate, different departments, so as to offer easy electronic exchange of data and information among them in the form of digital objects. For example, another example over here I take is, for example, when we start with a new batch, we start with a, say, our classes are starting for BTech students, say 1st of August or 8th of August, say. So what happens, there is many times there is a replication of the compilation of data. For example, the roll number of the students, the name of the students, one person who is compiling that information, that data is the class in charge. Class in charge is compiling, he is maintaining his own attendance register. Another person who is compiling or preparing that data is the finance department or accounts department, where the student has to submit the fees. So third later on, when a student enter into a 3rd or 4th year, third department that needs the basic information of the student is the training and placement department, if we consider training and placement department. So can we analyze our chain of activities and cross linkages between the requirements of different departments and come up with an initiative, so that a centralized information is compiled at one level. For example, 1 person or 2 person from accounts, 1 person or 2 person from placement cell, 1 person from the department in which the student has taken admission. So they sit together, and that information is compiled in at a single point of time, so that there is no deduplication, or there is duplication or deduplication of data, so that no effort is for compiling same kind of information. As teacher doesn't spend a separate effort, accounts department spend a separate effort, academic department spend a separate effort, and training placement departments spend a separate effort or time. So can we analyze and come up with a centralized one kind of systemic approach, where we can decide what are the key stakeholders, who will be the person responsible, and can we make that information in the centralized portal, and it can be repository, and later on it can be shared with all the departments. So can we do that? So it will save a lot of time of your teachers, of the training placement department, and of your accounts department also. So you will be able to focus on your core works, actual works that need to be done. So examples here are centralized admissions. You must be following that if you are an affiliated college, but if you are a university, you may not be. Physical counseling you must be carrying out, you may be carrying out. So you can shift to the online counseling mode. Then you can have the online exams in case you have come up with an objective form of testation. If it is a physical one, you can have the declaration of results being made online. For example, another example is Thapa University. Student web kiosks are there. I am presently pursuing a PhD from Thapa University. So what happens, as soon as the students take admission to the university, within the first 3 or 4 months, a web kiosk account is formed, and using that web kiosk account, the student can view all the relevant information that pertains to his or her candidature in the college. For example, as a candidate, I can view what
is the amount of fee and what is the deadline for submitting the fee. That fee can be submitted in 3 modes. One, you can physically go to the university, you can submit it in the bank branch or available over there. Second, you can submit it online, going in a bank branch of the same bank in some other city. You can submit it using IFSC code and all. Third, you can submit it online also using net banking. And once it is submitted, you need not go to the finance department of the university to take a receipt. Automatically from the web kiosk login, you can print your receipt for your fees. And that receipt will contain all the split up details of your fees. How much is the hostel fees, how much is the tuition fees, basic fees, how much is your traveling charges. So it will mention all the elements. In the same way, for providing the feedback of the teachers, student can do it online. But to avoid that, to avoid negativity in that, to ensure objectivity in that one student doesn't log in for all the students and submit a good performance appraisal of the teacher. So what is done for that? They have used intranet initiative, where on a particular day after 6 months at the close of the semester, students have to gather in a laboratory of the college, where only your feedback, SRS feedback for your teachers will be active, and sitting in that lab, you have to submit the feedback of the teacher. And each individual student will be sitting on an individual seat, and he will be logging in from using his details, and there the persons will be available on duty that will be making sure that our student is only logging in his account and filling up the feedback. So there are several other initiatives that, because of shortage of time, I would not be in a position to show. Otherwise, I would have shown you my login account. Then awards and scholarships, it is mentioned over there. Network libraries, as some of the institutions have shared that they are using the online initiatives where they have linked to the resources of IITs and certain other premier institutions of India, and they are extending those resources to the students at their end. It is there. For example, you can come up with American Society for Mechanical Engineers if you come up with the student chapters of those societies. So certain nominal fee, the membership fee your students have to pay, and in return those societies give you an online account, a login account where user ID and password is issued to each student, and each student can go online, and in that login account many good literature and reading textbooks are available. For example, one of my students, he became the student chair of ASME. So very good books on, say, mechanical engineering, entrepreneurship also, and several other aspects, wide range of experts. More than 200 books were there that a student may not purchase otherwise, may not find in a local market. So they can have access to those books online, since those kind of societies have contracts, intern contracts with the different kind of consortia and publishers, such as IEEE, EBSCOhost, and several other publishers. So when we talk of e-services, e-services can be viewed from different angles, but here we are listing only 3 of them. Government to government, provisioning of the delivery of the services by one set of government to the another set of government. For example, Aadhaar card, when we say, we say a citizen has to get a connection of say BSNL postpaid connection. So one set of things is, every citizen of India has a unique identity, UID. We have our Aadhaar card number that is issued by government. So BSNL, if it says you need not verify submit your address proofs and other things, documents, it can be done online using your Aadhaar card number, and we will verify it from your sending a person at your home. So it means sharing of that information of a particular citizen to the BSNL officials who are responsible for authentication is the delivery of G2G service. Means one government department is extending a service to the other government department through one of the initiative. It may be a government to business. For example, in case of taxation, certain government to businesses, if you have to declare your income tax
you have to file your income tax in advance. You have to carry out advance e-filing of your income tax. So e-filing initiative by the government is there. Government to the businesses, any corporate, any business house, maybe private or government, you can go to the e-filing website and file your income tax. And in the same way, government to citizens. This is another example is e-filing of your income tax returns online. This year you must have filed your income tax returns online. I have also filed mine. So this time you need not send your verification. It is done online. You need not send any document after filing your income tax to the central processing unit at Bangalore. So it is automatically government to citizen. This is another form of e-services. So here certain technical details are mentioned, so I am going to skip those technical details, as going into details is not relevant at this point of moment. Okay. Now we come to the relevant portion over here. Establishing an effective e-governance system in educational institutions, a generalized work plan. What is a generalized work plan if you have to plan an e-governance system in an educational institution? Here, first and foremost is the top management commitment. Your top management should have a conviction and should have a decision that they need an e-governance initiative. They should realize that they would be benefited if they go for designing or investing in such investing their time and money in such an initiative. Second is core committee formation. So once the top management committee commitment is there, they have to form a core committee. The member, who can be the members, what kind of roles has to be there, we will be discussing that also in the another PDFs. Then creating the awareness and environment for the change. It is essential part, because this activity can't be carried out in isolation, because for example, you have invested a lot of money in buying in electronic peripheral or in provisioning of good internet facility and in making a very hardcore team consisting of computer professionals and HODs of your different departments, but it will fail. It will definitely fail if you are unable to create a awareness and environment or readiness among your stakeholders, among students, among teachers or other staff members for using that. What is the benefit in this initiative for them? What happens many a times, initiative is there, it has a very good benefits that is beneficial for the stakeholder and user also, but we are unable to communicate those benefits to the user. So creating the awareness and environment for change here means that you have to explicitly and implicitly, verbally and documentedly, you have to express those benefits to the say your teachers. For example, I would take one example here of biometric attendance system. When we say a biometric attendance system, sorry for interruption, I will take a water somewhat. When we say a biometric attendance system, what happens the moment we hear this term biometric attendance is going to be there, and it should be there, our ear goes up. We think that it is a very negative initiative, that management is going to spy on us, they are going to treat us as machines, we are not being treated as humans. But I realized a hidden benefit of that biometric initiative in it. For example, when I joined one of the teaching institution in Jalandhar in 2007, I got one of my colleague who has spent certain years of his service in Dubai. So what happened? He said, Amar, when I was working in Dubai, for example, my official time is 9 o'clock, and if I reach my office at 9:30, it means my HOD will not question me, my any other colleague will not question me. Automatically, the system designed is such, my salary for 2 hours is deducted. Automatically, 9 to 11 means I am there, I have my personal work, I was able to come at the office, come in the office at 9:30 say. So automatically my salary for 9 to 11 will be not calculated, will not be added. So it is on me to decide whether at 9:30 I wish to start my work or not.
If not, I can start my work at 11 also. So here there are 3 benefits I realized, 3 or 4 benefits. For example, 1, if you come late as an employee, I come late without a biometric system also, leave a biometric system, and our senior, maybe HOD, maybe director if I am a HOD. So our director or HOD asks me or you, one of the person who is late, that why are you late? What will happen? Your HODs and your senior and the junior employee relationship will get disrupted, because there will be in his mind a question that he is making me, why he is making me, questioning me, and maybe I am in habit of coming late. Second time I came late, 3 time I come late. Every time my senior scolds me, what will happen? There may be a chance that there is a agony in the mind of the junior employee, and he will stop working, and this affects the performance of the department. But in other way, if I say a biometric system is in place which has a certain policy, biometric policy, and that policy, clear-cut policy, is communicated to the stakeholders also. For example, in our case, it is communicated on group email ID to all the employees that for 2 hours, there is a period of short leave, for 2 hours in a month, if you are late, you need not, your casual leave or any other leave will not be deducted. But the moment you are late more than 2 hours, for certain hours, say your 120 to 240 hours, your half day casual leave will be deducted. From 240 to 480 hours, your 1 day casual leave will be deducted. And if all of your leaves have finished, your earned leave will be deducted. Or if you are regularly late, some disciplinary action may be taken. So, but in case you are late because of assigned work by the institution, you have an exemption policy also. Exemption clause under that policy also. So, for example, a junior employee is late. He gives a request to his senior that, sorry, I was late because I have to leave my child to the school because he was unable to get his bus. So, what will happen now? The role of the HOD or senior employee would be in a compassionate ground. He will try to pacify or try to provide an alternative. Okay, this is fine this time. So we will not deduct any leave of you. So what happened? The scenario is same. Earlier also, our motive of the senior employee was to ensure the attendance of the punctuality of the junior employee. Now also the motive is the same. But now HOD, instead of being in a role where he is only in the fault finding role, he is in a role where he can help in providing a cover to that employee, maybe for the works where he was in a genuine need. So if this is clear, this benefit is clear, made clear to the employee, there is no reason that that employee or that stakeholder will say no to the biometric attendance system. So one thing I would like to say over here is that what happens, we get a biometric attendance system, we say Government of India says, or some organization, head of institution decide that biometric attendance system has to be in place. So we fail to put ourselves into the right position. We are not able to communicate the right thing to the right person at the right time. So what happens when a biometric attendance system is there? Sometimes as a seniors, we are trying to express our control over our junior employees. So there is the problem. There, that initiative is a complete failure. But if instead of doing that, I communicate the benefits of those initiatives to the stakeholder, individual stakeholder, I am sure they will be ready to accept that. So one thing is that I can't share all the things over here. So in longer run, it can save you from potential negativities also, where you may be wrongly indicted by some other person or authority mistakenly into a kind of negativity. But this system can save you also. There is objectivity. Nobody can deny that record. Nobody can deny what applications you have submitted, when you have marked that index. So this is one example where an element of importance has to be laid. So I will discuss one model also. I will draw one model. Then we come to the next level, creating the awareness and environment for the change. After that, there should be a planning phase.
there should be after planning, you have laid out your planning, there should be a development phase, then there should be after development there should be a implementation phase. Once you have implemented your initiative, there should be a maintenance and continuous improvement phase that will come from the feedback. Then there should be integration of the system with the central systems. We talk of central system. So here I will draw one model, how that model determines whether whether the stakeholders of any institution will adopt any technological innovation or initiative or not. This model was proposed by Davis in if I'm not wrong, 85-86. What happens? We go on implementing e-governance and e-services initiatives in our colleges without understanding the basic premise or basic theoretical frameworks that has been conducted by different researchers that they have done in their countries when their countries were in transformational phase. So Davis has given one model that is called TAM, Technology Acceptance Model, TAM, and that model says any technology adoption, if you talk of any technology adoption, it is affected by certain parameters that we called as variables, certain factors that influence the adoption decision of any individual user. So adoption can be at two levels. One can be at the firm level. For example, as a part of top management team, I wish to bring a technology from other country or from other institutions, say in India, to my institution. So one adoption can be at the organization level or firm level. Another kind of adoption is at the individual user level. So this model, when we talk of, there are more than 9 models, frameworks that are potentially used by the researchers. One is technology acceptance model that is used for studying the individual adoption of the technology by the individual. So it says the factors, behavioral intention to use, BIU. BIU is behavioral intention to use. That determines that whether e-filing or biometric attendance system or say e-approval system, any initiative, any technological initiative or any technology given to me, behavioral intention will judge if it is positive. I will be adopting that technology in case an opportunity is given to me to use that. Then there is an intermediary variable that contributes towards BIU is attitude towards using technology. Attitude towards using a particular technology, towards using a particular technology or any technology. When we say attitude towards using a particular technology, it means positive or negative feelings in the mind of a person. Means their attitude means whether my attitude towards adopting e-filing, online electronic filing for filing my income tax return, my attitude whether it will be positive or negative. If it will be positive, given the chance, I may not intend to use it. Certainly there may be a reason behind it, but attitude is the one variable that directly contributes to behavioral intention to use. And there are two more variables called as perceived. One is perceived usefulness, and another variable is perceived ease of use. Perceived ease of use. My voice would be doing. Another is perceived ease of use. Another is perceived usefulness. And perceived ease of use contributes to perceived usefulness also, and directly towards the attitude also. And perceived usefulness is also a determinant variable for attitude towards using a particular. So, what do we mean by perceived ease of use? Perceived ease of use means, for example, I have to e-file my income tax return.
So I have been given a laptop or computer in my home by my family members or in my office. I'm a clerk working in my accounts department. I have to online submit the tax deducted at source TDS for my employees to the right authority at the government level. So ease of use will determine my competence. For example, whether given a laptop is given to me, a particular software is there, whether I am finding it easy to use. कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे को ऐसा लग रहा कि यार मेरे से होगा नहीं, I will not be in a position to do it. मैं कैसे करूँगा? मेरे को ये डेडलाइन आ रही है, मेरे को 100 एम्प्लॉइज का डाटा अपलोड करना है ऑनलाइन, मैं कैसे करूँगा? That is ease of use. मेरे को टेक्नोलॉजी, मेरे को लैपटॉप यूज करना नहीं आता, मेरे को सॉफ्टवेयर ओपन करना नहीं आता, कैसे करूँगा? That kind of fear in mind. Then perceived usefulness is another parameter. Say I have been given training. So what is the solution over there? To provide the training to the employee. You hire a person who gives a demo. For example, new pension system. NPS is there. But as an employee, we are not aware of different modalities of NPS. How to create our account. So what CRA is doing? CRA agency, Government of India agency, they are conducting workshop on every say Saturday on periodic basis in 3 or 4 months to aware the employees, government employees who are investing in NPS, that how they have to use that, manage their NPS. So this perceived ease of use can be built using trainings, through training. So for example, you have given training to your employee, concerned employee or individual users, but now next determinant variable is usefulness. Whether I am finding it useful or not. For example, another thing, I put a simple example. I have been given I have 2 options. One is bike, one is my bicycle. From my childhood, I drive my bicycle. I am very much ease of use using driving my bicycle. At the time, my parents bought me a motorcycle. So in the initial level, ease of use were very much important. Though I may be having a motorcycle, but I may be finding it easy to use a bicycle. So there may be a chance where I can have both options, to travel by bicycle, to travel by the bike. But I may choose bicycle because it was more easy to use. But with experience, I am opened up with my craze or with your passion. You have learned to drive your motorcycle. Now the next question is usefulness. This will decide your attitude. This will make your attitude. For example, I am an employee. So there is one situation. I am overweight. And I have maybe to travel to my institution. I have 1 hour. So there are ease of use is there. I know how to drive motorcycle. I know how to drive bicycle. But useful for me would be to drive bicycle. Though this ease of use of driving a motorcycle is same, but I may find it more useful to go through bicycle to lose some calories. But take another scenario. Your usefulness may be to drive a bicycle, but you have only 20 minutes to go to your office, and your office is 8 kilometers, and you on the way you have to leave your kids to their school on a particular day. In that case, your ease of use is same, but your perceived usefulness would be different. And on that day, you would like to go through a motorcycle. So both of these determine your attitude towards using a particular technology, and that in turn determines the behavioral effects. And there were 2 more factors that in turn contributed towards these ease of use, that were computer anxiety and second was your computer anxiety and knowledge. Computer knowledge means basic your knowledge to create the computers, and anxiety is जो मैंने बात की पसीना. But these variables have been removed and these have been categorized together into ease of use. When a country is in an underdeveloped phase, these parameters, perceived ease of use and usefulness, play a predominant role. But when a country shifts from a developing to a developed phase, when you have come up with certain initiatives, people are aware, they are ready to use, then these
ease of use and usefulness parameters become less important, and more important parameters comes into being that contributes towards attitude. For example, one those two parameters that affect two factors that has been added later on, and that is called as theory of planned behavior. Theory of planned behavior. One is your subjective norm and perceived behavioral control. Subjective norm and perceived behavioral control. It means subjective norm is if I use a particular technology in question, what the people in the society will think about. Perceived behavioral control is whose decisions, whose mindsets influence me the most. For example, I take a peculiar example over here. For example, I bought a more than 6 months past. I bought I used to, for example, when ICT based program started, in the initial, for example, 10 centers are there. And earlier we used to make all the payments for lunch and all. For one center, I have to keep a record, and for one center, I have to make 40 pages photocopy. 40 pages, 10 centers in a one program means 400 copies. 400 pages I used to waste, 400 ink. For 400 printing, 400 pages ink was used. What happened? For auditing purpose, I have to keep those documents. What happened? Then we evolved. I found one software over the internet with time. That software is very much able to. That is CAM scanner. That is a synonymous of scanner. That has made the use of scanner obsolete for me. So I can scan the document 300 pages on my mobile. So what happened? I chose a new mobile. That I have to purchase a mobile that costs only 12,000 rupees, in the range of 12 to 13,000, and that has a good performance. So I chose a Lenovo Q4 Note. When that mobile came, I had a 3 GB RAM, and it gave me a good amount of internal storage also, if I'm not wrong, 16 GB, and good battery backup. So I started making those documents in that mobile. So once the bills are clear, I delete those documents from my. So once what I have done, I have stopped printing pages. I have stopped using the ink of the printer. Third thing, what I have done is, with that mobile, I got one glasses. You must be aware of virtual reality 3D glass. They have given a 3D glass, and with wearing those glass, you can place a mobile inside those glass, and you can have watch a 3D movie, a 3D experience. You can. So that technology, for now, India is shifting from developing to developed economy. It means those companies are foreseeing a market in India. But what happens? Whether Indians will adopt that technology? As a person concerned about the health of the society, I would not recommend, because your distance of watching a TV means it has gone close to your eye. But second parameter to decide, there may be another company who will market it in the form that you are a marketing professional, you have to travel frequently. When you are in the bus, maximum tiredness is caused by the surrounding sound. So you can put your headphones, you can watch a 3D knowledgeable video. While on your move, you place your goggles, those 3D glasses, place a mobile, put your headphones, watch an educational video. For example, my hometown is 160 kilometers away from it. 3.5 hours if I travel back to my home, I have to be in the bus. Can I use that time to enhance my knowledge, to prepare my lecture for the training program? That is one aspect. But if I use those glasses, so my decision will be, my attitude will be based on subjective norm and perceived behavior. Means अगर मैं वैसा एक ग्लास लगा के बस में बैठ जाऊं, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर 60 लोग बस में हैं, वो कहेंगे ये पागल है, he has gone insane. There will be several kind of comments. So, fearing that subjective norm, I may not adopt. But my sibling, my children or youngster who are younger to us by 4 years or 5 years, they may adopt it in a real-time database. They may use a keyboard also and seeing the screen on that 3D glasses. There may be multiple options. So perceived behavioral control is
whether my seniors recommend it or not. For example, for example, I am sitting in the home, I watch a movie using that glass, whether my parents will object, whether my wife will object, whether my brother will object, or whether they will approve. So this is a basic model that can be used in time, in your organization to study. There is a questionnaire available for measuring each activity, and using that, conducting a basic statistical analysis, you can analyze whether the people, what is the resentment among the people, whether they will be in a mood to accept that technology or not. And this can be this kind of survey can be designed at the initial level also, middle level also, or at the end of the technology adoption also. So then we come to the next slide, logical architecture of data warehouse for higher education. We are not discussing about that. Now I take one example of, I hope this will be visible. If not, this PPT I will give to my department to forward it to you. So my wife is working as a government teacher with a state government department. So at on one day she was filling up her data, and when I accompanied her to the school, I thought, when I saw that portal, I was wondered to see that in a remote area, in a remote village of Punjab, how the government of Punjab is ensuring the quality implementation of their initiatives in that remote area. For example, earlier, if a change of name in student is made wrong, and board class has been done 10th or 12th, so that data had to go through a physical letter. First, it has to go to a educational office at the district level. Then it will be forwarded to the head office at the Chandigarh. But now, how the things have changed? They have made it online. For example, that initiative named is ePunjab School Management Information System. Here, a member login is provided to each school. Login in that through that initiative. Each faculty member's teacher attendance is marked online. In a government school, attendance of the teacher is marked online when they enter their premises, and that attendance is uploaded from there only. And internet connectivity is provided in that. Basic internet connectivity is provided in each and every school of the government school of the state. So first, under the staff college, I will quickly share what are the login columns they have kept it, field parameters they have kept it. First, you can update your staff, any new staff added. You can approve the staff data. Head of the school can approve the staff data that new new teacher has joined or old teacher has been relieved. Posting status, what is the present posting status? Staff attendance, then staff attendance approved by the senior, staff out of service, staff transfer request. What a wonderful thing! If a staff wish to get a transfer to some other school in some other district also, that staff can submit its request online also. Staff sanction post, what is the sanction post? And delete staff. If a staff has been transferred to another school, his or her data can be deleted from that particular login of a particular school. Then mark the staff attendance. I have tried to show that parameter. So that snapshot you can see when this sheet comes to you. So next is what kind of leaves. They have highlighted that attendance type also, whether the staff is present, whether the staff is absent, whether first half day leave is sought by the staff, whether he has sought for second half day leave, full day leave, medical leave, maternity leave, 1/3 leave, 1/3 leave, earned leave, child care leave, leave without pay, or half pay leave. So all kind of leaves they have categorized and they have integrated with this information system. Now student, when we come to the data of the student, you can add the data of the student, you can update the data of student, you can the concerned class teacher can approve the student data from their end only. You can allot subject to the student, what subject have to be offered in a particular class to the student. You can delete the data of the student, you can delete student history, you can mark student attendance, it has to be marked over there, which student is absent, promote student to the next class, fetch student from other school. So all kind of data is maintained online using that portal. Then third parameter over there is
when we select the class, basic parameters they have kept to be class. Class is 6, 7th, 8th. For example, that is a middle school where she is teaching. Then there is a section A, B, C, D up to Z. The alphabetical order they have given all the sections. Then stream, then group. They are not relevant over here. So I am showing some of the list of the students, but font size is small. So when it comes to you, you can see. And you can update the data of the student. And these are showing the parameters of the student data. What are the information elements they have chosen? For journal profile, for the student, they have kept student UID. Aadhaar card has to be uploaded. Student name has to be uploaded. Date of birth has to be uploaded. And religion has to be uploaded. Admission date has to be uploaded. And weight also. Weight. I'm sure. Weight. Why they are asking for weight? It means that some of its information must be going to National Rural Health Mission and other governmental agency also. What should be the according to the class, what should be the weight and height and what kind of health profile of the student should be. And because midday meal is also linked to these funds are linked to these schools. And then father's name is there, gender, whether the student belongs to a below poverty line family or not, what is the admission number, what is the mother's name, category, kind of disability. It means data must be linked with, cross-linked with the Department of, some information elements must be cross-linked with Department of Social Justice and Empowerment also. Height of the student also it has asked for. And there, Agyapal is the student. Here his admission number is 495. Height is 40, weight is 45 kg. Height in centimeters is 138. Then house number is there. Correspondence address details are there. House number, Gram Panchayat or town, state, pin code, district, village, ward, and what is the phone number of the concerned warden or the student. Then student is gender, male or female, it is there. Category OBC, SC, and ST. And religion, minority, they have asked for all Buddhist, Christian, Hindu, Jain, Muslim, others, Parsi and Sikh. Why they have asked for? We will come up with that also. Achha, disability. For disability, they have had all the information elements. For example, we may not think of it. They have kept it autism. Whether the person is suffering from autism, you must be aware of autism. Means our children become so fearful among himself or herself that कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है. Low vision is there, cerebral palsy is there, hearing impaired kind of there, learning disability is there, locomotor or mental retardation, multiple disability or speech or blindness is there. So they have gathered all these relevant key, what kind of key elements of data we would be needing for this portal. After that, they have integrated into this portal. Okay, then they have kept a state also, state of their residence. There may be a person who originally belongs to Bihar or Uttar Pradesh, but they have migrated to Punjab for working, but they are getting education in a government school in Punjab. So they have kept the state of their correspondence address also, if they have kept their residence over there also. So it is there. Then district also it is there. Now we will come immediately to the update student data. We are not, I am skipping this. Then they have another login element over there, field over there, from where you can opt for the scholarship for the particular student, based on whether he is a minority student, whether she is a girl child, whether any stipend has to be paid. You can update scholarship data, you can delete scholarship data, you can approve scholarship, you can generate scholarship reports, and rejected scholarship reports are also there. So here some of the scholarships that are listed over here are pre-matric scholarship for students whose parents are engaged in unclean occupation. For the students for getting admission, theory admission from 1st to 10th class. Second kind of scholarship, pre-matric scholarship for OBC students, 1st to 10th. Then promotion, third type of promotion of education among educationally backward classes, Raj Vidhayak Bhilai scheme for 6th to 8th standard students. Denotified tribes, ST scheduled caste, scheduled tribes, 1st to 12th. Pre-matric scholarship for minority students, 1st to 10th. So there are, I was not, even I as a citizen of India, I was in isolation, ignorance. I was not aware that for a particular student, if I have to guide him, there are 5 types of scholarship that are valid, that a student from 1st to 12th can
avail of. But this information has been made available online in the portal. Even if a teacher who has joined new into the system, he will not face any difficulty. He can see the scholarship. He can mark the students over there. He can mark the students over there for which scholarship which student is eligible. Then scholarship details are there. I am skipping it. Then you can there is a reporting parameter. Reports also included it. You can view the number of report. One is you can view the number of students by class. You can view the number of students by age and class. You can view the number of students by caste and class. You can view the number of students by religion and class. You can view the number of students by class and stream. You can view the number of students by stream and trade. You can view number of students by class and disability. You can export the list of students into Excel also. Means each individual government teacher need not maintain a separate register. For example, 5th class teacher has made a register. Automatically, that when the student get promoted to 6th class, that list can be used. And students and subject-wise report can be generated. Attendance can be generated. Monthly attendance report can be generated. Can be exported to Excel. Then infrastructure details. You can add infrastructure detail. In infrastructure detail, you have 3 kinds of detail: basic detail, infrastructure detail, and classroom and other rooms detail. So here in basic details, you have phone number of the school, email ID, year of recognition of the school, does school run in shift, whether it runs in single shift or multiple shift, and when it is constituted. You can have infrastructure detail in details. For example, total area of the school, number of buildings, rooms, auditorium is available or not, playground facilities there, school covered area of the school in square yards. So several this kind of parameters they have listed. Basic details continues, infrastructure continues, details of other rooms, whether you have a computer room, whether you have a EduSet facility, whether you have a mathematics lab, whether you have a language lab, whether you have a library room, whether you have a staff room. Deepika, see, just share with him 5 minutes more, 5 minutes more. Okay. So this was one initiative. Now I will immediately come to what was the benefits that I foresee when I analyzed this initiative. We realized from this kind of initiative. First one was there was a speed up of each and every activity involved in the education system. In a state, several districts are there, and in a district, number of schools are there. So as a result of this system, the time will be saved that would otherwise has to be spent in terms of sending of the data through conventional postal means. If the data has to be sent from different nodes to a centralized location, it means you must be using a speed post or a registered post. That has time will be saved. That the paper will be saved, as printing will be done at the centralized level as per the need only. You need not do multiple printing of the documents. The money to be spent on postage will be saved. That is there. The accuracy of the data will be ensured, and easiness in the provisioning of the various benefits by the government to the eligible ones. For example, here I have given an example. For example, by mistake, the father name of one student has been entered wrong. So 2 brothers are studying in the same school. One is studying in 8th, one is in 6th. And their data go to the centralized level. Once scholarship is approved for 8th class student, when a 6th class student data goes of the same sibling, second child of the same family, so automatically the fault will be detected. A fault was detected that father name is incorrect. So how it will be indicated? His or her school, the younger children's scholarship will be not approved. Then school has to re-verify where was the mistake. Mistake was in the father's name. Using the unique identification number, UID card, they have to again upload the data, correct it, and scholarship will be again reinforced. So this activity will be done in 1 or 2 months. But suppose if this has to be done through a conventional postal mean, once you submit the data physically through post for scholarship of a student, that post after 6 months come back to you that there is some mistake. No person of this kind exists in India. He has not been registered whose son is this.
this younger children whose son's father's name is this. So again your information has to be compiled at Node, and then again it has to go back. The student will be promoted to next year only. So scholarship will, the basic purpose of scholarship will be denied. But in this case, within 2 or 3 months it can be reinsured. So as a result, the effectiveness and efficiency for delivery of the system is there. Okay. In case of the transfer of a teacher, her record will be automatically transferred to the new place of his or her posting. She need not carry each and every detail himself or herself. Thus, it makes the transfer transparent and hassle-free. Means you need not approach the intermediary. You need not pay money to anybody, because your request you can submit your request online, and once the post is available in some other place, it will be provided to you as per rules. The attendance of the teachers and students is entered into the information system daily, and it puts a check into the manipulation of data later on. Means अगर एक बार attendance real time पे upload हो गया teacher students का, उसमें manipulation का कोई chance बचता ही नहीं. That's it. Since अब एक और benefit जो मैंने analyze किया, since each teacher enter his or her class attendance onto the system through a centralized login provided to the school, their skill in handling the computers is improving, and they will find the technology easy to use and useful. अब एक गवर्नमेंट टीचर या एक पर्सन जिसको ईज ऑफ यूज बहुत कम था, जो वो ये ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करेगा, तो उसका ईज ऑफ यूज बढ़ेगा. एंड आई एम श्योर this will in turn lead to another positive outcome, that the teachers in future will also start using other services provisioned by government, such as online filing of their income tax returns and others. Once their ease of use is made, they will look forward to use other services by the government also. The systems allows the editing of data for updation, correction, entry of new details of the student, staff during the first 5 days of the month, so as to maintain a systematic information management. So they have made a policy that whenever a data of the student is made, during first 5 days you can edit according at your level. After that you have to send an email to the higher authority, and it will be done through our knowledge in the centralized information, so that there is systematic management of information. Some problems to be tackled to realize the true potential of such systems are to ensure the provisioning of electricity on a continuous basis in your institutions, the quality of internet connectivity provided to the educational institutions. This was this presentation. I thank you for listening very patiently, but I need to show certain other documents without which this session will be incomplete. So I have downloaded different documents from Government of India website. So for the first document, I will give it to my department to send it to the different nodal centers, the local coordinators, and that can be shared with the different participants also. First document in which it pertains to the activities and achievements of the government under Digital India program. Here the relevant page that I wish to highlight was the first page. From the first page, one can read out to be the benefits of an e-governance initiative, that it makes your system to be participatory. It follows the rules of law. It is accountable. Once you have an e-governance system in your kitty, you are accountable. You have fixed the accountability of the person. It is equitable and inclusive. It addresses to the needs of all the stakeholders, maybe students, maybe teachers, maybe industry, maybe academia. It is transparent also. It is equally visible to all the persons. It is transparent, it is responsive also, and it is effective and efficient also. But here I would like to show you the 48 page number is the relevant page number. I have in the title I have marked which page number is relevant page number of in the each PDF. So here page number 48, the relevant page number starts. So in the first PDF, that is titled 1, here when you go through 48 pages and onwards, you will find all the different kinds of bodies that are providing technical support to the Government of India in context of e-governance initiatives. For example, one of 2 or 3 I will name: National Informatics Center,
NILIT is there, National Institute of Electronics and Information Technology, and certain several other organizations are there. So it is a database for you. You can see in your area which body, government body is present, and how can you establish linkage with them to get a technology expertise, to get a implementation knowledge, to get a planning, to include the relevant person during the planning phase for your institutions. So NIC is there. Quickly I will scroll down. NILIT is there. Then electronic medical records is there. Then you have HotNet is there. So you have CDEC, Center for Development of Advanced Computing are there. So you have different organization, Media Lab Asia, that is assisting the Government of India in provisioning of e-governance services. NIXI is there, National Internet Exchange of India. So you can go through all the relevant bodies that provide, that you have to approach if you go for an advanced e-governance initiative. So this was the first document. In the second document that I have kept over here is this second document is a Digital India document pertaining to the Digital India, that gives a detailed view of Digital India initiative, what is its objectives, and how it is being implemented. Here the relevant page number is page number 56. So on for Digital India, Government of India has highlighted that there are 9 pillars that marks the success of a Digital India, that are essential for the success of a Digital India, and here they have listed pillar 4 as e-governance. So here when you I wish to discuss this, but I am just going through it. You can read at your end. So here the pillar fourth pillar on page number, starting from page number 56 in the second document, is the e-governance, and it highlights all the e-governance, what kind of here India now, what are the spotlights of this initiative, what they expect of India next to be. So we have talked of one thing where I was saying vision, where you would look forward your initiative to be after 4 years. So you have to see from here, you can take some guidance from here, how they have articulated where India is now, what are the spotlights, and what you expect from India in next step to be. So you can have it for your department, you can have it for your institution. For example, I am reading one, India Now. They say certain services require interdepartmental consultation, which means physical file movement and approval process. This again leads to delay in service delivery time. So spotlights that they have provided is interdepartmental consultation. So what is the key area of concern over here? Interdepartmental consultation. What they expect out of this initiative to be through e-governance? They expect implementation of the e-office mission mode project, MMP project, in government departments for a more efficient decision making and communication process. Then adoption of interoperability and open standards in design and coding using standard common apps, APIs, and for e-governance applications. Then they expect increasing number of contributors in the service delivery in a constructive and methodological manner. So there are several other they have highlighted. So you can take a guidance from over here. And how mission, what are the principles for reforming your initiatives in your colleges through a e-governance mode. So here all the online pillar 4th is the main pillar to be referred at the start onset. Then I have termed our document 3. I have named another PDF as a document 3, and that document 3, from that document 3 is a e-governance competence framework. That document 3 is a e-governance competence framework for Digital India. So what this competence framework is? This competence framework is what kind of roles
what kind of roles, if you plan a e-governance initiative, you would be your institution has to perform, what kind of people you need to have, you need to involve from your organization, and you have to hire from outside. So what kind of core competence could be required for implementation of a e-governance project? So when we go over here, the relevant page number is it starts from page number 4. So I will show you over here the key parameters. This third PDF is the most important if you wish to go for a provisioning a e-governance initiative in your institution. So here the purpose of this document is to provide an introduction to e-governance competency framework. Second is to describe the components of the e-governance framework, competency framework, bring out the benefits and applicability of the e-governance framework, then provides insight on how to implement the e-governance framework at ministry, department and state level. So when you go into the detail, okay, first of methodology. What methodology? I will share you the name of the stakeholders also, but before that we will go in a sequential way. Let us discuss the important parameters over here. Okay, first one, e-governance competency framework development methodology. First, they had a face-to-face consultation with a wide range of stakeholders. Then second, they had leveraged international best practices, standards, methods and framework. Means they have benchmarked themselves at what level of e-governance they wish their initiatives to be. So you can benchmark yourself against other institutions who are implementing e-governance initiatives in their institutions. Then they have focused consultations by leveraging trainings. You have a chief information officer, leadership meets, and science and technology entrepreneurship parks inputs. Then online jam. They conducted online survey to get inputs from a large cross section of the stakeholder society. Then validation of each role. They have prepared a list of what of the important roles in a e-governance competence framework should be, and after that they have finalized the list. What the challenges, pain points of e-governance practitioners were. A practitioner, we say to a person who is actually involved in the implementation of an e-governance initiative or any initiative, is called a practitioner. Theoretician is a person like you and me, who is academic person who is involved into research. So the practitioners, they had a challenge. What competencies do I need to do the work? For example, for planning a e-governance initiative, what kind of skills I should have? Where I can find help and support? What kind of institutions I should approach? What kind of people can help me? Just as I have highlighted, NILET, NIC, CDAC and other institutions. How can I identify the right training for myself? From which department I can get the trainings for my team members? What competence do I need in the future? आज मैंने अपने टीम को अप कर दिया, इन फ्यूचर क्या क्या कहाँ से मेरे को हेल्प चाहिए, किस तरीके की कंपिटेंस चाहिए. देन रिक्वायरमेंट्स फॉर competencies growing or shrinking with evolution after 6 months, 1 year, 2 years, whether I will be needing more kind of equipment, more kind of training, different kind of technologies, hands-on on different technologies or not. Then they have conducted a categories what the issues people are facing. So I am not going to into the detail of each. Here I will just highlight that based on the survey, it was found that training need analysis and assessments. Training need analysis and assessments are the foremost crucial that was faced by the institutions. What kind of training is required and from where we can get. What should be the team structure was the second.
following that, how to what kind of team structure, what kind of role should be there, where we are lacking mapping of their available resources with the required technical know-how, and user readiness to use computers. This was fourth one that I have discussed in context of technology adoption. Then your training needs, then all others, junior level staff training, your course design, they were the slightly less contributor. So validation process was followed by them. Now we immediately come to the roles. Okay. Then they have come up after this analysis. The Government of India came up with the e-governance competency framework, which identifies and defines the set of competence critical to the job profession. They have categorized into the 4 categories. First was the professional skills, that called for project management knowledge, change management knowledge, and here they have defined 96 skills under that professional skills. And second, they have categorized second type of skills into knowledge. Knowledge you need the knowledge of your members to be aware of the procedures, your rules, internal systems and methods, how your operations are carried out. Then third kind of skills required, third set of skills required are behavioral skills, organizational behaviors, values, etc. And Department of Personnel and Training, Government of India has provided their competency dictionary to the government to assist in this. So fourth one is training courses, certification and the qualification required. What skills you can acquire through training courses, certification and qualification. So they have come up with this. Okay, under roles, they have categorized different roles under management and administrative roles category, role catalog. They have 8 different kind of roles. One, under managerial and administrative team, you have to play you should have a leader. There is a leadership role to be played. There is a chief information officer should be there, chief technology officer should be there, project manager should be there, domain expert should be there, change and training management team should be there. Then there is finance commercial management role is to be there performed. Citizen engagement management or your stakeholder engagement role is to be there. If you what you will be needing following technical personnel for planning advanced e-governance system in your institutions. That will be information security management role, technical architect role, service management role, technical support management role, testing and quality management role. And sixth one is programming role. You will be needing programmers. Your seventh role is knowledge and content management role. What should be the content of your online communication, your brochures, your communication to your stakeholders. Network support engineer role is there. Networking for ensuring the wide reach of your initiatives to the stakeholders. Database administrator role is to be there. Security administrator role is there. Project support coordination role is to be there. It is too important to note that the roles are title, position, person or designation agnostic. One person may perform one more than one role also. Alternatively, one role may be performed by more than one person also. So one person may be in charge for 2 or 3 roles also. He may be a programmer also. He may be a project leader also. Or same role or doing a one role, you will be involving different kind of people also. For example, for programming, your junior worker may also assist and your programmer will also be there. So it will depend upon the type and level of the e-governance initiative you are going to plan. If it is a basic e-governance initiative, then you can implement it through 10 or 12 people. If you are going to a very intensive high level involvement level e-governance initiative, so wonderful, this document will provide you a very thorough guidance. So they have given a very good chart on page number 32 of this PDF. That is, this chart is on 34 of 144 of the document, and in the PDF they have linked each role with the e-governance life cycle. Means, for example, in e-governance life cycle they have set different phases of e-governance. First phase that is relevant to us is e-governance strategic development. Since this course is a strategic planning and management of technical institution, so first phase of the e-governance life cycle is e-governance strategic development. Second phase is current state assessment.
where your institution state stands as on date. Third phase is future state definition, where you would like to after 6 months, 1 year, 2 years. Then your fourth phase is your implementation approach and sourcing. What will be your implementation approach? How will you source different type of people? Then your next phase will be development and implementation system, and how your system will, what will be the components of your system, how it will be deployed. Operate and sustain. Last phase, you have to operate it successfully, demonstrate it, and sustain it in on a longer term basis. So they have done color coding over here. It shows that leader's role is important throughout each phase of the life cycle of the e-governance, starting from strategic development to the operate and sustain last phase of the e-governance. Chief information officer role, project management role is also throughout the life cycle of the e-governance plan. Chief technological officer role will also be omnipresent, starting from the first phase to the last phase of e-governance implementation. Then project management role will start at the current state assessment phase. Project domain expert role will start at current state assessment, and project management and domain expert role will go up to middle of the operate and sustain. Then information security management role will come with the future state definition, at what level you would like to have the security, where you would like to have a high risk security measures, where low risk security measures. For example, in student data you can have low risk security measure, but in case of online provisioning, online payment of acceptance of fees, you need to ensure high security measures. So information security management role will come at place with from future state definition phase. Your finance commercial management role will start with current state assessment only. Project support coordinate role will also start with current state assessment phase. Knowledge and content management will start at future state definition. Service management role will come in development and implementation plan, implementation of the system. Testing and quality management role will also start with will start at the future state of definition, and certainly you have certain other roles. In the same way, they have mapped the competencies, different kind of competencies, what kind of competencies and at what level they are required, at which phase it is connected. They are connected. Light has gone off. Okay, they are connected. Okay, at what kind of competency will be required at which phase of the e-governance framework life cycle. So they have linked these competencies also. Since we are already over time, so I am not going to discuss it individually. So this PDF I am providing you. I will also ask my department to share it with you. So another next PDF would give a one special case where e-authentication is there. The kind of thing I was talking of, how your UID data, or how you can implement an e-authentication project. You can design an e-authentication kind of initiative in your institution. So kind of e-Praman framework for e-authentication that government has adopted. You can use similar kind of base document for developing an e-authentication initiative in your institution. So this fifth document is an example, will be an guiding parameter for that. So these were the 6 documents that I would wish to discuss with you, and with this I stop over here. I hope this must have provided you a conceptual understanding. One more point in the end. What Government of India did, there is one more document that is called as called as a report of the expert committee on HR policy for e-governance framework. E-governance means what kind of people we will be needing to make e-governance framework a success. So here what government did, they did it in a very structured manner. If you see the date of issuance of these documents, when a minister or a particular secretary, one of the document is signed by Nandan Nilekani ji, one of the document is signed by Honorable Minister for Information Technology, Government of India. So several ministers and several secretaries have signed this document. So when you go into genesis of this document, you find
First, they conducted an expert committee meeting. They formed an expert committee. That committee proposed a HR policy for e-governance. HR policy, also I have highlighted the page numbers. What are the HR challenges that e-governance initiative may face? So based on that HR policy, they have come up in the next year, 2000, if I am not wrong, 2013. This document, for example, January 2013. This document was HR policy. This report of expert committee on HR policy for e-governance was submitted by Shri Nandan Nilekani, chairperson, who was chairperson of expert committee. In 2014, December 2014, if I am not wrong, they have come up with e-governance competency framework. And after that, in 2015, they have come up with policies, policy level documentation for each mission mode project of e-governance. Means how you have to start. First, you have to form a committee that will conduct a different kind of readiness analysis, or on what kind of people you will be needing, what would be the challenges. Second level will be to link the roles, to fix the roles and map those roles and competencies to each phase of e-governance life cycle. And third will be the developing of policies under each initiative. Then after that, any e-governance initiative of you will be termed as a successful initiative of that. So this was not a short-term plan. These things were started by government of India, any government, maybe Congress or maybe BJP, but it was started in 2006, and we are seeing its fruits. We are seeing it in media in 2016. So it means 16 or 17. Now we are realizing that Startup India, Atal Innovation Mission, Atal Incubation Centers, 10 years it has took to evolve. So with this, I end my session over here. I hope you must have got some insight to it. And quickly I would ask for any questions from any Noodle Center. Thank you very much. So first we come to SGT University, Gurgaon. Any questions from over there? Hello. Hello, and welcome, sir. No question from our side, sir. Okay, thank you. Then Balaji College of Engineering and Technology, Jaipur. Any questions from your side, sir? No questions? Any questions, sir? Balaji College of Engineering and Technology. Okay. Then we come to Global Institute of Technology. Yes, sir. Any questions? Yes, sir. Sure. First of all, good morning, sir. Good morning. Very good morning. I am Utsav from GIT Jaipur. And sir, first of all, thank you very much for the immense information you have given us regarding the e-governance system. And sir, out of curiosity, I was asking something like, actually, who is maintaining this software? Like, who is developing and maintaining this software, and what is the cost of implementing this software? Just for curiosity basis. That's it. That is, as far as I have involved different people in my sessions, NIC is the backbone, NIC and NILIT. So for certain things, NILIT is providing the backbone. So for certain NIC, for example, biometric attendance system in Punjab, it is being in the state of Punjab. It is being monitored by one senior technical director who is heading the biometric implementation in the state of Punjab. His name is Bharat Bhushan Se. And in the same way, for another initiative, you have Shri Vivek Verma ji. So for each initiative, for each state, NIC has a senior technical director, senior level people over there. So, NIC, NILIT is there, and the one private body corporation is Section 23 company is also there. CDEC is also provided, and NIC IC is also there. One more information corporation is there. So the first document I shown here, there in the last, it mentioned different kind of institutions. So those institutions are the backbone
of the e-governance implementation for Government of India, and for the cost it will vary. It will vary from initiative to initiative. It will vary from the project deliverable to deliverable. So you can get in touch with the concerned director at your NIC office in your state, so they can help you informally. So that's why I shared that you can, if you plan an initiative, you can involve them as a team member in conducting stakeholder meetings with the as a member of those teams, so that you get their guidance. So that was the purpose. Thank you. And sir, that e-authentication system, was that like biometric? E-authentication system is not only biometric. E-authentication system can be, for example, you have to, I am submitting the fee, and through say I am submitting it through a portal, and to ensure the security that it is being submitted through a genuine portal, and it is the payment is coming through a right person who is for example, Amardev is eligible to apply. For example, sometimes happens that in your college account money is coming from a source that is non-identifiable. For example, in NITTTR also it happens. For example, certain amount is deposited, then our accounts officer issues a letter circular to all the departments, that all departments are requested to make sure whether this payment has been received on any project of that is being ongoing in their account. Otherwise, it has to be reported to the right authorities. So, to ensure the authenticity, that the right payment is coming from the right person through the right source and for the right purpose. It is. So actually, how are you doing that? Like passwords or some biometric, or the combination of both, sir? There, what we can do, there I can provide the number of Saurav Kaushal. In our case, in NITTTR, Saurav is one person who is very much expert in this online e-authentication and these kind of things. One, I can put you in direct line with Saurav. Second is I can share with you contact of NIC person who is directly in touch with me. So maybe he may provide you some insight into it, detailed insight into it. So you note my number. My number is 94172 3474. 3472. 4. It is 94172 93474. Okay, sir. So I can help you in putting you in right line with the right kind of people, because I will not be in a position, since I am not have that technical depthness knowledge into that area. So I will put you in line with them. But sorry, I do not have that knowledge with me. Okay, thank you. Okay, Any other questions? Okay, thank you. Any other question? Any other question? Any other question, sir? So thank you, sir. It is all from our side. Okay, thank you very much. And since I am very much sorry, we are overshoot of time and our next speaker is with us, so I would request the nodal center not to break. In fact, you just request the tea arrangements to be served in the session only. So we are straight away starting with our next session. Sir, it is fine. We are starting with our next session, and it was started at 10 because BSNL lease line and uska cross linkage में attempt चल रहा था. 9:45. It was 9:45. Yes. Okay. So we are starting with our next session. We have with us Shri Arun Sharma ji, and Professor and Head Dr. S.K. Dumeja is also with us. Arun Kapoor sir. So without, I'm sorry because since in the morning we were experimenting that to take back our connection to the lease line, but we were unsuccessful in that. So it is again in Wi-Fi mode. So we are straight away starting with our next session. We have our next speaker with us, Shri Arun Kapoor ji. Yes. You can. No, मैं पूछ नहीं रहा. Okay. Interaction. Yes, that is. Okay, a very good morning to all of you. So we have with us our next resource person, Shri Arun Kapoor. Kapoor Saab is basically an engineer from the Punjab Engineering College, which is now the PC Institute of Technology. And then he did his MBA, and then he did his MPhil also. And Kapoor Saab actually is basically an entrepreneur right now. He has started his placement agency with the Concord Associates is the name of this agency. Initially he was an academician, he was a professor,
in one of the universities in the south of India. And then he left that job and joined the corporate sector as in the multinational company at Bombay. And then from there he left that also and started his own business basically. Now the purpose of this session is to have interaction with the Kapoor Sahab and to listen to his experiences basically, how he started this his own business basically of a placement agency. So how do you plan, and then how do you manage a sort of a separate business entity basically. So that is the topic of this session. It is more of a experience sharing by Kapoor Sahab basically. So I request Kapoor Sahab to start the session, and then we can have some question answer at the end of this session. So I once again welcome Kapoor Sahab and sir. Yeah, the session is yours. Yes. Kapoor Sahab, we have 5 centers at different locations. We have 2 in I think 2 in Rajasthan, 2 in UP, and 1 in Haryana. And they're all from technical field basically. They're all engineering colleges or universities basically. And the teachers are sitting over there, and they can see you. They can listen to you also. Good morning, everybody. First of all, let me thank Dr. Dhamija from NITTR and his colleague Amardev ji for having provided me with this opportunity to be with all of you. I have been asked to share my past experiences with you. I understand that most of the participants are working as faculty in different technological management institutes, 2 in Punjab, Haryana, 2 in Rajasthan, and 1 in UP. So I believe most of you are having technical background and you have been teaching BTech or diploma in different streams of engineering or management. You have a Herculean responsibility to prepare people for tomorrow, engineers for tomorrow, managers for tomorrow. So I am here just to interact with you and ask you few questions. What have been your experiences as teachers? And what is that your requirement is? What is that you would like to ask me in this particular session? I'll give you a little brief about myself. My name is Arun Kapoor. Today I am 61. I did my engineering in electrical stream with specialization in electronics, communication engineering from Punjab Engineering College way back 76. Thereafter immediately I went for my MBA. I did my MPhil in business management, and after this my first assignment was as a lecturer in business management faculty at Punjabi University Patiala. So there I was teaching MBA students, both full-time and some defense course people were attached with us to correspondence, along with different subjects like operations, materials, behavioral. They were giving some diploma courses. After that, I moved as an associate professor of management sciences in South. I worked at Coimbatore. I was teaching MBAs and ME in industrial engineering. After that, I moved to industry in Bombay and Bangalore. I worked with a very good organization, professionally managed. I was looking after their human resource development program, basically confining myself to training, development, and recruitment. That was my routine job. Was there for quite some time. Later I realized that I should be doing something of my own, and I ventured into consultancy business, which comprises basically for human resource development, recruitment, placement, training and development, and consultations. This is what I have been doing all these years. Now, if I look back and see what has been my expertise that I have gained over the years, one,
I have been into recruitment, interviewing a good number of people, one-to-one basis. One day I was just sitting and having a recap. I calculated that roughly, very conservative estimate, I have met at least 2 lakh people on one-to-one basis and helped them procure employment. And maybe hundreds of them got employment out of lakhs, 2 lakh people minimum which I have seen. This has been my forte. 2, I have been conducting a lot of sessions, workshops, seminars, training and development programs, and talking to a different cross-section of management staff, support staff, supervisory staff, and sometimes even at worker level. I have been interacting with them in regular 1-day, 2-day, 3-day workshops. This is what I have been doing. Now, when I look back what I have learned all through in this career, it is basically understanding human behavior. Before starting this session, I was sitting with Dr. Dhamija in his office. We just spent 10-15 minutes. He asked me a question, Kapoor Sahab, my daughter is about to finish her CA final. She's appearing in coming November. What she should be doing? So I just asked, why are you asking this question? This question should be given to the child, your daughter. She should be the first person to decide whether I have to start something of my own. I have to work for somebody else. Somebody else could be in government sector, public sector, private sector. And again in private sector, a professionally managed company, a regional company, a family-owned company, a private limited one, or an ownership company. He said, why are you asking all this? I said, just see, you see the bent of child, bent of mind, what that person wants to do. What is in her mind. That is the most important thing. Now, you see most of colleges, universities, institutions, what they boast of. You see their advertisements, they say, we were visited by so many companies. These are the major companies. Then they highlight some branded names. We were visited by Infosys, we were visited by HCL, Wipro. They are the ones Accenture came. Then they say, this is the highest salary package offered to our students. I am yet to see an advertisement from any organization, maybe in private sector or government sector, leading universities, colleges, or even their professors, deans, principals, who says that every year out of 200 students who pass out, 20 became entrepreneurs, 50 started something of their own. Nobody even talks about them. But when it comes to curriculum, they all teach entrepreneurship. What a laughing stock it is all about. What you preach, you don't follow it. And you all the time boast about only creating employees for bigger organizations or smaller organizations. And you only highlight the names of the well-known companies, not the companies which are going to become well-known tomorrow, started by some entrepreneurs. And if somebody joins them, you don't even mention. They say it is just a beginning for you, a learning stage. The day you catch hold of a good brand name, we will write in our brochure, our student XYZ got employment with this name. It is highly fashionable. So basically, you have to study in your students what we are doing. What I found as a teacher, what we do. We are allocated some subjects, like in MBA it is marketing management, production management, financial management, organizational behavior, HR, operations. So
one teacher who starts teaching a particular subject, it is very rare that he or she changes the stream. They continue to teach the same subject over the years. They don't even want to venture into a different field, allied field. Now you just see, you are looking at the whole person, the student who's coming to you. You are not responsible just to understand and tell him about marketing management, which you are teaching him, or electrical machine design you are teaching. You are meeting that person as a whole person, the complete person. Maybe he has some initiative in him. Maybe he or she has some very good organizing capabilities, administrative capabilities. You could be telling that person that better you develop in that particular area. I remember while I was studying in engineering college, we had one professor, Dr. Jha, Dr. Rameshwar Jha to be precise. He used to teach us electrical controls, transmission lines. He was the one professor who would also take some social interest in us. Talk to us as a person, beta, how's your life? Who are in your family? What are your aspirations? So one day that professor told me, Arun, you should not be in an engineering institution. You are meant to be an administrator. You are very good in handling people. This is the skill which most of us are not having. So you better go into that area. And it started me think over that what the senior professor is telling me, there's something good. And perhaps it was one of the inputs which gave me a direction that I should go and work for my MBA program. Again in MBA, one of the professors, he is telling me, Arun, since you have an engineering background, you go for operations research. This is the latest those days. Computers were not there. And since I found it very scoring, it will improve my percentage, my position in the class. I'll remain 1 or 2. My liking was for marketing or human relations. I was very keen to do something in organizational behavior, leadership, motivation. But those subjects were not scoring. The teacher said you go for operation research, and I also found it's the easy way out. I study little and I get 100 out of 100 or 95 out of 100. Yes, that subject did help me today in optimization studies, quantitative techniques. They are helping me out. But had I gone for my favorite, my first love, organizational behavior, those days, it would have helped me much more. Yes, once I went into work, ultimately I moved into the direction of human relations, people, study of people. That is what I really did. It really helped me. So, as a teacher, I believe it is your responsibility. Not only limit yourself just to the subject you are teaching. It is your responsibility to tell the student on one-to-one basis, in a very friendly fashion, maybe over a cup of tea, in a social setting, where you talk just like an elder who is concerned about the thought's future. And you see that child thinks of you like a god or a demigod or a very superior figure. You perhaps don't know, but he values you like anything. And with the words you say, it is just like something writing on the wall for him. See, my professor, Dr. Jha, told me something 40 years ago. 40 years ago, he told me. Till date, I remember his words. That time, I was a highly impressionable boy, hardly 17, 18, 19. And I remember what my prof told me. He said, this is what it is. Second, I met a professor in my management program, Dr. M.K. Sharma, Mahinder Sharma ji to be precise. I would visit him several times for correction of my project work, mini project work, whatever assignment he would give me. So one day he told me, he said, Arun, there is something unique about you.
I said, sir, what is that? He said, you never copy from any book. You never copy from any other project reports which are available in plenty in the library from your seniors and others. You always write on your own. Your ideas are own. I said, sir, how you make it out? He said, beta, I can make it out. I'm your professor. I can easily make out from the way you write who is written from him on his own or who has just copied it from some text. And he gave me the direction. He said, whatever you will do will be unique. You will be doing something of your own. And I tell you, they were the motivating words which make you think that yes, whatever you are doing, maybe you are not scoring very high compared to others, but you are different from others. And that is the difference which has to be reflected in life. That has to come to the fore. That is where your uniqueness comes. That is where comes your own stamp. We call it your signature, your style. Or who you really are, you are telling the world in your day-to-day work, your daily expressions. That is where you come. This was my past. That is what I have been doing. Now, may I have some interaction with the people who are listening to me? Nobody is visible to me on the screen. What is that you are expecting me to talk on? What are the 2 or 3 questions you would like me to dwell on? May I ask the audience members, please? Do we get audience? What is that SJT University? ये कहाँ पर है? गाजियाबाद. Hello? Yes? Hello? कुछ सुनाई नहीं दे रहा. Don't use this microphone. Come near to this system and speak. ग्लोबल ये कहाँ पर है? ग्लोबल टेक्निकल कैंपस लिखा हुआ है वहाँ पर. जयपुर में तो जयपुर राजस्थान. अच्छा, आप जयपुर से बोल रहे हैं. आपका कोई सवाल है तो पूछिए. नहीं सर. नो सर, थैंक यू. भाई थैंक यू किस बात का? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आपने कुछ पूछा नहीं. आप किस एरिया पर मुझको बात करना चाहते हैं? वही तो ये मुझे अभी तो तो आपस में ही बात कर रहे हैं, कोई इंटरेक्शन तो हो नहीं रहा. Yes, sir.
आप ये माइक मत यूज कीजिए, जैसे उनके पास आगे बात करें। हेलो ऐसे कि हेलो सर आप ये माइक मत यूज कीजिए, जस्ट सिंपल बात कीजिए। सर आई एम सेइंग डोंट यूज माइक। You just have to come and speak, sir. हेलो ऐसे सर Yes, sir. Sir, I want a new business, sir. Hello, what is the strategy, sir? I'm starting, sir. So how to registration, sir, in new business? सर आप एक्सटर्नल माइक कोई मत यूज कीजिए, सिंपल सिस्टम का माइक यूज कीजिए। जस्ट आपको सिस्टम के पास आके बात करनी है सर, कोई माइक मत यूज कीजिए एक्स्ट्रा। Hello. यस सर। How is it audible, sir? सर आई एम सेइंग कोई एक्सटर्नल माइक मत यूज कीजिए, जस्ट जहां पर आप खड़े हैं वहां पर आके सर को बोलिए कि बात कर लेंगे, हम सुन पाएंगे उन्हें। Hello, sir. हाँ जी बताइए। Hello. हाँ हाँ सुन रहा है। SCP University, sir. Sir, we want to new business, sir. What is the strategy for sir, registration, sir? What is the? Hello. हाँ Sir, I want to new business, sir. बताइए। What is the registration process, sir? What is the? Sir, how to registration, sir? Hello. किस चीज की? कौन से कोर्सेज? क्या बिजनेस करना है? कौन से कोर्सेज की? बेटा आप किस कोर्स की बात कर रहे हो? सर एक्चुअली तो पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन कोई बिजनेस स्टार्ट करना है अपना नया, कोई नया बिजनेस अगर स्टार्ट करना हो तो उसके लिए कैसे रजिस्टर करें, मतलब अपने आप को पहले क्या स्ट्रेटेजी हो, बेसिक स्ट्रेटेजीज को क्या किस तरीके से रजिस्टर करें, मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ। ओके ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। देखो आप कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, यही सवाल है ना? सवाल आपका ये है कि हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, क्या करें? सर पहले तो आप थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए, बिजनेस के कुछ सक्सेस तो कीजिए। रजिस्टर तो बाद में अपने आप हो ही जाएगा। यू हैव टू जस्ट टॉक टू ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। रजिस्टर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है वहां का, उसके पास चले जाइए, उसको कहिए सर मैंने ये अपना काम शुरू किया है या करना है। मान लो आप सिर्फ सेल परचेज का काम शुरू कर रहे हो, आप सिर्फ टीवी बेचना शुरू कर रहे हो, तो उसको कहो सर मैं ये काम शुरू कर रहा हूं, या मैं एक रिपेयर शॉप शुरू कर रहा हूं मोबाइल्स की। तो दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिंस ही इज अ कमर्शियल मैन, ही नोज ऑल द रूल्स रेगुलेशंस, वो आपकी कंपनी जैसी होगी उसका नाम रजिस्टर भी, नाम भी चुन देगा, रजिस्टर भी करवा देगा, और आपको जो जो उसके लिए चाहिए फॉर्मेलिटीज, आपको एक सर्विस टैक्स नंबर चाहिए अगर आप रिपेयर वगैरह कर रहे हैं या रेस्टोरेंट खोला हुआ है, या आपको कोई सेल्स टैक्स नंबर चाहिए अगर आप सेल परचेज का काम कर रहे हैं, तो ही विल इंटरैक्ट विद दोज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड हेल्प यू एक्वायर ऑल दैट। मतलब आपकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज टुवर्ड्स गवर्नमेंट हैं फॉर एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस, ही और शी विल हेल्प यू फुलफिल दैट। तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम की आवश्यकता नहीं आएगी, तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट इट। द मेन थिंग इज दैट यू शुड हैव एन आइडिया कि हम क्या कर सकते हैं और उसको वर्केबल करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस।
तो मैंने करना क्या था, सबसे पहले तो मेरे पास एक दो क्लाइंट होने चाहिए जिनको मुझको बिजनेस मिले, जिनके लिए मैं काम करूं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना। हाँ, एक दफा आपकी गाड़ी चल पड़ी तो चल पड़ती, फिर उसमें आपने सिर्फ गियर शिफ्ट करने हैं। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो पहले आप पांव से धरती को पीछे धकेलते हैं और अपने साइकिल को दोनों पहिए घुमाते हैं। आपका एक पांव एक पैडल पर होता है। जो ही साइकिल गति पकड़ लेता है, स्पीड थोड़ी सी पकड़ता है, तो आप अपना दूसरा पांव उठाते हैं और सीट के ऊपर बैठ जाते हैं। फिर धीरे धीरे आप अपनी स्पीड बढ़ाते हैं और जब कहीं मोड़ आता है ब्रेक लगाते हैं। जब कहीं आपने चक्कर काटना है, घूमना है, रुकना है या तेज चलना है, सड़क खाली है, तो अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। तो इन रियल लाइफ यू विल हैव, जैसे आपने वो गेम खेल लिया ना बचपन में, सांप और सीढ़ियों वाला लूडो खेला है, ऐसे ही आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी, एकदम आपको ऊपर उठा देंगी। ऐसे ही आपको सांप काटेंगे, सांप इन द शेप ऑफ सम कैलेमिटी, मे बी इन द शेप ऑफ some your competitor he or she is cutting you down. So this is how your experience will start accumulating और आप अपने आप को ट्रिगर करते रहोगे और सेल्फ मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहोगे। So first of all, if you have any business idea in your mind, you are firm about it, you want to say that I am starting it, I am going ahead with it, go ahead with it. No problem. For example, you want to start a small restaurant, और कुछ नहीं तो आप मान लो सिर्फ इडली डोसा सांभर का एक साउथ इंडियन जॉइंट खोल रहे हो, तो उसके लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हो, वो आपकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देगा। फिर वो आपको ये भी बताएगा कि सर इसमें आप फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के कंट्रोल में आते हैं, आपको गुड हाइजीन का सर्टिफिकेट लेना होगा, आपकी ये चेकिंग होगी, उनके डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन होगी। तो ऑन योर बिहाफ ही विल फिल दी फॉर्म्स, आपके साइन सुन लेकर आपका वो सब रजिस्ट्रेशन करवा देगा, आपका काम शुरू हो जाएगा। पर मेन चीज उसके लिए है कि आपके पास टेक्निकल नो हाउ होना चाहिए, आपके पास सीड कैपिटल होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, और जो एस्टेब्लिश्ड कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी लीडिंग है मार्केटिंग में, उनसे आपको लोहा लेना पड़ेगा। तो कम से कम लोहा नहीं लेते तो एटलीस्ट अपना प्रोडक्ट उनके बराबर का तो बनाओ। पर क्योंकि आपका बराबर का प्रोडक्ट है तो आपको मार्केट में घुसना है, तो आप तब घुसोगे अगर आप अपनी प्राइस थोड़ी कम करते हो, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, तभी लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज आपके पास नहीं आएंगे, वो दूसरे के पास ही जाते रहेंगे, एस्टेब्लिश्ड बंदे के पास ही जाते रहेंगे। आपको मैं एक बड़ी सिंपल सी स्टोरी सुनाता हूं निरमा वॉशिंग पाउडर की, निरमा ब्यूटी सोप की। आज तो ये बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, one of the huge companies in India, a conglomerate you can say. But way back in 1969, when this company started in Ahmedabad, it was a part-time venture of a established employee, a chemist in a company. तो उन्होंने अपनी सिर्फ पार्ट टाइम इनकम बढ़ाने के लिए घर के पिछवाड़े में अपने आंगन में कुछ केमिकल्स मिलाकर एक डिटर्जेंट पीले रंग का पाउडर बनाना शुरू किया। उनके पास पैकेजिंग फूकेजिंग भी कुछ नहीं होती थी, तो वैसे ही थैली में बंद करके स्टेपल करके किलो किलो का वो आदमी अपनी साइकिल पर करसन भाई जाते थे, अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, गली मोहल्ले में जान पहचान के लोगों को उनके घर जाकर कहते थे भी मैं साइकिल पर ये लाया हूं, मैं घर में बनाता हूं, तो ये ले लो। और जब उन्होंने अपना निरमा बनाना शुरू किया, उस जमाने में सर्फ बड़ा मशहूर था हिंदुस्तान लीवर का, अब तो इसको हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कहते हैं। तो सर्फ वाज दोज डेज कॉस्टिंग 13 रुपए किलो, और निरमा वाज सोल्ड एट ए प्राइस ऑफ ओनली ₹3 पर किलोग्राम। तो आप देख सकते हैं कि 20% प्राइस पर, 18 या 20% प्राइस पर ये अपना प्रोडक्ट बेच रहा था, विच वॉज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। तो उससे जितना भी लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप के लोग थे वो अट्रैक्ट हुए और उन्होंने लेना शुरू कर दिया। फिर कई लोगों ने, कंपटीटर्स ने, उन्होंने अफवाह फैलाई कि इससे हाथ खराब हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, ये स्किन के लिए अच्छा नहीं है। पर जो यूजर्स थे वो देख रहे थे कि यार ये 3 रुपए किलो दे रहा है और बढ़िया कपड़े धुलता है,
और इससे कपड़े फटते नहीं हैं, जैसा वो कहते हैं कि इतने हाथ भी खराब नहीं होते जितने वो बताते हैं। तो इट स्टार्टेड गेनिंग स्ट्रेंथ इन द मार्केट एंड नाउ यू अंडरस्टैंड इसका पता नहीं कितने हजार करोड़ टर्नओवर हो चुका है निरमा पाउडर। सो यू कैन वेरी वेल सी कि एक आइडिया बढ़िया होना चाहिए। अगर आइडिया वर्केबल है, बढ़िया है, फिर धीरे धीरे ये डिटर्जेंट पाउडर से आगे बढ़े। अब देखो इन्होंने पाउडर बेचना शुरू किया, पहले साइकिल पर बेचते थे, फिर इन्होंने काफी हजारों लोग रखे, सैकड़ों लोग रखे अपने पास। इट वॉज ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, हाथों से ही मिक्स करते थे डब्बों में और बेचते थे। फिर इनके जो सेल्समैन थे ये दुकानों पर जाते थे प्रोडक्ट बेचने, और दुकानदार कहता था भी देखो हम तो हिंदुस्तान लीवर का सर्फ रखते हैं तो आपसे हम खरीदेंगे नहीं, अगर आपने अपना माल बेचना है तो अपना माल हमारी दुकान पर रख जाओ, महीने के बाद आना, अगर बिका तो तुम्हें इसके पैसे दे देंगे, जो नहीं बिका तुम्हें वापस कर देंगे। हमारा तो तुम यहां स्थान ही ग्रहण कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट वेस्ट जा रहा है। तो तब भी खुश होते थे कि चलो साहब आप हमारा निरमा पाउडर यहां रख लीजिए, 100 पैकेट 200 पैकेट रख लीजिए, अगर इसमें 5 10 20 बिक जाएं तो हमें उसके पैसे दे दीजिएगा। तो कई दफा ये होना शुरू हो गया कि वो प्रोडक्ट धड़ाधड़ बिक जाता था निरमा। फिर भी दुकानदार जब हमारा सेल्समैन निरमा का उनके से पैसे लेने जाता था तो वो पैसे नहीं देता था, वो कहता था इसमें ये खराबी है, इसमें ये खराबी है, तो बिक नहीं रहा है। तो फिर एक दिन करसन भाई को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा यार हमारा इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, बिक भी जाता है, ये पैसे भी कमा लेते हैं और हमें हमारा मूल भी नहीं देते। तो उन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी पैदा की कि अब हम दूध सी सफेदी वाला वॉशिंग पाउडर निरमा, इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट बनाया और इसको सारे मीडिया में, न्यूज़पेपर ये वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छोड़ दिया, और उनसे अपने सारे प्रोडक्ट वापस ले लिए दुकानदारों से कि भैया हमारा माल बिका के नहीं, हमें हमारा प्रोडक्ट वापस कर दो। वो ले लिया। अब निरमा वाज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट विद एनी ऑफ द स्टॉकिस्ट, विद एनी ऑफ द शॉपकीपर्स, और उधर मार्केट में, मीडिया में इनका इश्तिहार आ रहा है, विज्ञापन आ रहा है, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी वाला वॉशिंग पाउडर निरमा। और देखो अब महीने में सब लोगों का ज्ञान बढ़ गया और कईयों ने कहा यार अब हमें जबरदस्ती 13 रुपए किलो वाला सर्फ लेना पड़ रहा है, वो पहले 3 रुपए किलो वाला निरमा आता था, वो मिलता नहीं, पर इसका विज्ञापन तो मिलता है। रोज हम कोई भी न्यूज़पेपर खोलते हैं, कोई भी अपनी ये जो मैगजीन वगैरह खोलते हैं उसमें उसका आता है, रेडियो सुनते हैं तो उसमें उसका जिंगल आता है, वॉशिंग पाउडर निरमा। अब एक महीने में इन्होंने इतना लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया कि नाउ दोज पीपल स्टार्टेड गोइंग टू देयर नेबरहुड शॉपकीपर के भैया पहले तो तुम हमें निरमा दे देते थे, अब ये मिलता नहीं है, क्या बात है। अब इसका इश्तिहार भी आता है, विज्ञापन भी आता है, पहले तो आता नहीं था। तो फिर उन्होंने निरमा वालों को अप्रोच किया कि भाई साहब हमें निरमा दे दो। तो निरमा वालों ने कहा भाई अब आपको हमें पहले पैसे चुकाने होंगे, फिर हमारा माल आपके पास आएगा। अब हम आपसे ना पहले फ्री में माल देंगे, फिर बाद में मांगने जाएंगे, बेगरी करेंगे कि जी हमें हमारे पैसे दे दो दे दो दे दो। अब जिसको चाहिए वो हमारा माल उठाए, पैसे दे, हमारा बंदा दे जाए। और फिर उनके वहां क्यू लग गई, सब शॉपकीपर्स, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर्स हाथ जोड़कर पहुंच गए कि जनाब आप हमें निरमा की सप्लाई शुरू कर दी। तो दिस इज हाउ एक आदमी जिसने एक साइकिल अपने घर के आंगन में निरमा बनाना शुरू किया, अपने साइकिल पर जाकर बेचना शुरू किया, और शुरू में इतनी मुंह की खाई लोगों से कि दुकानदार यूज भी करते हैं आपको, आपका प्रोडक्ट भी यूज करते हैं, पैसे भी यूज करते हैं और आपको ठेंगा देते हैं। फिर अगर आप युक्ति लगाएं, दिमाग लगाएं, उन्होंने अपना दिमाग लगाया और ह्यूज सेल पैदा कर दी अपने मार्केट में। फिर इनको अकल आई, बड़ी बड़ी कंपनियों को, मल्टीनेशनल्स को, कि यार वी शुड नॉट टेक द लोअर इनकम ग्रुप सेगमेंट्स नॉन सीरियसली, इट्स अ ह्यूज सेगमेंट। अब धीरे धीरे जैसे इन्होंने सोचा ऐसे ही निरमा वालों ने भी सोचा। निरमा वालों ने पहले तो लोअर इनकम ग्रुप सारा कैप्चर कर लिया, अब उन्होंने मिडिल इनकम ग्रुप को कैप्चर शुरू कर दिया। फिर उन्होंने सोनाली बेंद्रे जैसी एक्ट्रेस पकड़ी और सौंदर्य साबन बना दिया कि ब्यूटी सोप निरमा।
ये एक साधारण सोप नहीं है, एक आम आदमी का नहीं है, ये सितारों की पसंद है। एंड दोज डेज सोनाली बेंद्रे वाज द रेज इन इंडियन सिनेमा, अ फ्रेश फेस दोज डेज। और उनके इश्तिहार आने शुरू हो गए। नाउ पहले उन्होंने डिटर्जेंट मार्केट को इनकी खत्म किया, उसका काफी हिस्सा मार लिया। अब इन्होंने जो जितने भी सोप्स थे, साबुन थे, उस मार्केट में अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया, अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। अब साथ ही साथ में इन्होंने क्या किया कि डिटर्जेंट्स में बैकवर्ड इंटीग्रेशन शुरू कर दी। मतलब जितने भी केमिकल्स पड़ते हैं डिटर्जेंट बनाने के लिए, वो भी खुद बनाने शुरू कर दी। मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंस धीरे धीरे कम करनी शुरू कर दी और सारा काम आप करना शुरू कर दिया। अब देखिए, एक छोटा सा आइडिया है कपड़े धोने का या अपने सफाई पर्सनल हाइजीन के लिए साबुन करने का, जिस पर तब तक सारी विदेशी कंपनियों का ही हक था, उन्होंने पूरा अपना कब्जा किया हुआ था। तो एक बंदा, एक उसका आइडिया, वो भी उसकी पार्ट टाइम जॉब थी, नौकरी फुल टाइम करता था और फिर उसने अपना बिजनेस चलाया, फिर धीरे धीरे उसने अपनी नौकरी छोड़ी, फिर अपने बिजनेस को बढ़ाया। और आज देखिए निरमा यूनिवर्सिटी, निरमा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्या क्या इदारे उन्होंने बना रखे, निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, निरमा टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, कितना उन्होंने फिलैंथ्रोपिक जॉब कर रहे हैं। सो इट वाज अ वेरी स्मॉल आइडिया वे बैक इन 1969, आज से सिर्फ 47 साल पुरानी बात है, कोई ज्यादा नहीं है। And by the time it was 80s, it was a big success. It was a huge success in 80s itself. And today it is one of the biggest companies in India. So you can say the idea may be very small idea. It may be very scratch, but you can create a big empire out of it. अब देखिए बॉम्बे में एक है ये डोसा प्लाजा, उनका कोई 4 से 8 करोड़ का टर्नओवर है। ये आदमी साउथ से आया था और इसने वहां एक चाय की दुकान पर नौकरी शुरू की थी। बर्तन साफ करते हैं या कप्स लेकर या गिलास लेकर जाते हैं और लोगों को चाय पिलाते हैं। फिर धीरे धीरे इसने अपना नौकरी वहां से छोड़कर अपनी चाय की दुकान बनाई। सिंस ही वाज फ्रॉम साउथ, उसने फिर अपने डोसे बनाने शुरू कर दिए, खोंचा लगा लिया डोसे बनाने का, जैसे खोंचा होता है वो लगा लिया। फिर धीरे धीरे एक शैक बनाया, खपरेल बनाई, फिर एक छोटा सा बूथ लिया, फिर उसको थोड़ा बड़ा बनाया। अब उनका एक चेन है, फ्रेंचाइज देते हैं डोसा प्लाजा, 8 करोड़ का टर्नओवर है। यू कैन मेक इट। और बंदा अनपढ़ है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, कोई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में नहीं गया, आपकी तरह कोई बीटेक नहीं किया, कोई एमटेक नहीं किया, कोई डिप्लोमा नहीं किया, कोई एमबीए की डिग्री नहीं, कोई पीजीडीएम नहीं, कुछ नहीं। और उसने कितने ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है और कितने ही लोगों का पेट भरा है। So you can, even if the idea is very humble, very small, you can create something great. I'll just tell you, in 93 एक लड़का मेरे पास आया, कोई 28-29 साल का। He was a Christian, Mr. Massey. उसका IQ मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगा। The only great thing about him was spoken English was very good, dress sense was great. उस जमाने में वो काफी डिओड्रेंट्स वगैरह लगाता था, काफी फ्रेग्रेंस उससे आती थी, एंड ही वाज अ वेरी प्लीजिंग पर्सन। और हिज लिसनिंग पावर वाज ग्रेट, सुनता बहुत था लोगों को। तो मुझे सेल्स के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए था, मार्केटिंग एसोसिएट, मैंने उसको रख लिया। ही वर्क फॉर मी फॉर 3-4 months, 6 महीने काम किया, बट समहाउ ही लेफ्ट। He said, सर मेरी अब शादी हो रही है, मुझे किसी अच्छी कंपनी में लगा दीजिए। तो I got him a job in Swaraj Mazda. There is a company which was manufacturing light commercial vehicles by the name Swaraj Mazda. तो उसमें उसको मार्केटिंग इंजीनियर एग्जेक्टिव लगा दिया। Then every time whenever he would come to me, he would say, सर मेरी सैलरी बड़ी कम है, मैं खुश नहीं हूँ, मेरा एक बच्चा भी हो गया है, मैं बड़ा तंग हूँ सर, मैं बड़ा तंग।
अच्छा, उसका एक पार्ट टाइम बिजनेस था लड़के का कि वो स्कूल्स को यूनिफॉर्म्स वगैरह, जैसे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं ना, तो यूनिफॉर्म्स वगैरह इधर उधर से लेकर अरेंज करके अपना कट ले लेता था, तो वो अरेंज करता था। तो एक दिन मेरे पास आया, तो मैंने कहा यार ये तो तेरा बिजनेस है, इसको तो फुल टाइम ही कर ले। तो सर मैं अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करूंगा? तो मैंने कहा ये रिस्क तो तुझे लेना पड़ेगा। टुडे दैट बॉय एम्प्लॉयज अबाउट 50 पीपल, यूनिफॉर्म्स तो नहीं, अब वो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को वुडन और ये जो दूसरा मेटेलिक फर्नीचर देता है। और जैसे स्कूल्स में प्ले थिंग्स होती हैं जितनी, जैसे वो आपके रैम्प्स वगैरह होते हैं, झूले होते हैं, बैठने के लिए बेंचेस होते हैं, क्लासरूम्स में होते हैं, आपके ये ब्लैक बोर्ड्स वगैरह होते हैं, स्टैंड्स होते हैं, ये सब बनाता है। And he was just telling me, sir, now my clientele is in some major universities. Sir, मैं अब आर्मी को भी सप्लाई करता हूँ। A plain graduate, I don't think even if he is a second class, रॉयल क्लास में पास है, and he is leading an excellent lifestyle. Almost every 3-6 months he is going abroad. अभी मुझे बता रहा था, सर मैं वहां सिर्फ सैर करने गया हूँ, बिजनेस ट्रिप भी अब मैं नहीं रखता। So, if you have an idea, you are doggedly working for it, you can make it. और अगर आपके इंस्टीट्यूट्स में कुछ ऐसे प्रोफेसर्स या ऐसे आपके अभिभावक घर में हैं जो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, to be something on your own, that would be something excellent for you. पर अगर आप सिर्फ नौकरी के चक्कर में ही बच्चे बना रहे हैं कि जी हमारा बच्चा फलानी ऑर्गेनाइजेशन में लग गया है, इतनी सैलरी पर लग गया है, इतना उसको पैकेज मिल रहा है, then you are only producing employees who are going to work for much bigger organizations, but they will always be working for others. They will change one company, one organization to the other for their betterment, और दूसरों का ही काम करते रहे। So you have to just guide your students with the ideas that they start doing something of their own. Hello, sir. हाँ, Sir, I have one more question. बताओ। Sir, there is very famous concept which is running in India all over the world, multi-level marketing. Yeah? क्या कह रहे हैं आप? सर एक कॉन्सेप्ट है जो आजकल बहुत फेमस हो रहा है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इंडिया में भी और बाहर ऑल ओवर द वर्ल्ड। मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेयर मार्केटिंग, जैसे वेरी राइट, आजकल जैसे एमवेज वगैरह हैं, कई कंपनीज हैं, ये लोग कर रहे हैं। इट सिंपली रिक्वायर्स योर बेसिक स्किल्स इन सेलिंग। सो सर आई वांट टू नो ठीक है या गलत है, मतलब क्या है सर? You are working, the concept is of somebody else. आप किसी और के कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं। It is not your concept. You are just in it to make money out of it. What I am suggesting is that you do something जिसमें आपका दिमाग लगे, जिसमें आपका अपना आइडिया हो, जिसको आप आगे बढ़ाएं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया मिस्टर मैसी का, ये बंदा सेल्स में बहुत अच्छा था, पर इसका अपना काम करने का था, दूसरों के लिए काम करता था, पैसे कम मिलते थे, खुश नहीं रहता था। इसका अपना रुझान स्कूल्स में बड़ा था, बच्चों से बड़ा इंटरेक्ट करता था, टीचर्स के घरों के में जाता था, उनके नाम तक जानता था, उनको हैप्पी बर्थडे कहता रहता था। तो मैंने उसको एक दिन यूं ही सजेस्ट किया कि यार तेरे इतनी वेल्थ ऑफ नॉलेज है, तेरे पास इतने कॉन्टेक्ट्स हैं इन लोगों के, तो इनको एक्सप्लॉइट क्यों नहीं करता? कि सर मैं कैसे करूं? मैंने कहा यार ये सिर्फ यूनिफॉर्म्स, बुक्स वगैरह थोड़ी होती हैं, इनको फर्नीचर भी चाहिए, ये कुछ भी चाहिए, और फिर सर्विसेज भी चाहिए, कैंटीन्स भी चाहिए स्कूलों में, तो इनको पकड़ ले, बिजनेस शुरू कर ले। And he got one idea, that was furniture and other fixtures which are used on a permanent basis, और जिनकी recurring requirement रहती ही रहती है। And you work on it and it becomes a very big business for you and you make something out of it. You can do it.
अब देखो पंजाब में काफी लोग बाहर जाना चाहते हैं, बहुत लोग बाहर जाना चाहते हैं। आधा कनाडा में पंजाब के लोग बसे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए हैं। यहाँ कितने ही लोग ऐसे हैं जो, काफी लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पता। सो द सम पीपल हु हैव लिव्ड अब्रॉड, उन्होंने कंसल्टेशंस खोल ली, दे हैव बिकम ओवरसीज कंसल्टेंट्स। दे हेल्प यू डिसाइड किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, कितने पैसे में हो सकती है, आपका वहां रहने का इंतजाम, फर्स्ट एडजस्टमेंट का इंतजाम, आपका वीजा, आपका टिकट वो आपके घर दे देते, सब कुछ आपको मिल जाता। आप एक गांव से हो, आपको इंटरनेट भी नहीं पता क्या, आपकी उम्र 18 से 22 साल है, सिर्फ आपके बाप के पास 3, 4, 5, 6 लाख रुपए हैं। सो दिस मैन आउट ऑफ 5-6 लाख वो 1,00,000-1,500,000 खुद जेब में रख लेता है, रेस्ट वो आपका टिकट टुकट करता है और आपको किसी कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, ग्रीस में कहीं एडमिशन दिला देते हैं। और इस बंदे का कैरियर सेट हो जाता है और इस बंदे को वो यूनिवर्सिटी भी उसकी फीस में से कुछ परसेंटेज देती है, वो उसको फीस मिलती है। एंड दिस मैन, सिंस ही इज हेल्पिंग 2 people, one university over there gets students from foreign country in foreign currency, one this person जिसको कोई आइडिया ही नहीं है उसको एक अच्छी जगह एडमिशन दिला देता है। दोनों का काम सेट हो गया, इसका बिजनेस सेट हो गया। तो ऐसे कई ही एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अपना ये बिजनेस चालू कर लिया। दे आर डूइंग ग्रेट इन इट, यू कैन डू इट। आपको सिर्फ वो नीश ढूंढनी है, वो खाली स्थान ढूंढना है जहां पर आप वो बिजनेस पैदा कर सकते हो। तो यू जस्ट लुक आउट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। ये आपको कोई बताएगा नहीं, अगर वो आपको बताएगा तो आप खुद क्यों नहीं करेगा, आपको क्यों शेयर करेगा? इट इज वेरी सिंपल लाइक दैट। अब कितने ही केमिस्ट पीएचडीज हैं, क्या उनको साबुन बनाना नहीं आता? क्या उनको कुछ केमिकल्स जोड़कर डिटर्जेंट बनाना नहीं आता? सबको आता है। करजन भाई वाज नॉट ए पीएचडी, ही वाज जस्ट ए प्लेन बीएससी एंड ही वाज वर्किंग एज ए वेरी ऑर्डिनरी केमिस्ट, प्लेन केमिस्ट। पर उसके दिमाग में बिजनेस था, उसके दिमाग में एक आइडिया था कि यार ये सर्फ वाले 13 रुपए किलो बेच रहे हैं, जबकि इसकी कॉस्ट 13 रुपए है नहीं है, वो 10 रुपए प्रॉफिट मार रहे हैं, 10 नहीं तो 8 रुपए प्रॉफिट जा रहा है। उसने 3 रुपए किलो में निरमा बेचना शुरू कर दिया। 4 रुपए तो मैंने भी लिया 70s में। माई मदर यूज टू गिव मी 4 rupees एंड आई यूज टू बाय 1 kilogram ऑफ निरमा। स्टेपल होता था, पीले रंग का होता था, पर इट इज वेरी चीप, वेरी इकोनॉमिकल कंपेयर टू 13 rupees kg and it is a huge success today. You all will agree it is a big success. तो आइडिया लेकर आइए, अगर आइडिया इज वर्केबल। अब देखो चंडीगढ़ जैसे शहर में टिफिन सर्विस बहुत है, क्योंकि यहाँ पीजी बहुत रहते हैं, पेइंग गेस्ट बहुत रहते हैं, बहुत पेइंग गेस्ट रहते हैं। वो बेचारे हॉस्टलों में रहते हैं, उनको खाना अच्छा नहीं मिलता। कुछ लोगों ने क्या किया, उन्होंने घर में ही, किचन में ही, पहले घर में हाउसवाइफ काम करती है, किसी की हेल्प पार्ट टाइम लेकर 5 बंदों का खाना बनाना शुरू कर दिया, 5 से 15 का कर लिया। आप हैरान होंगे कि अब उन्होंने 5-5, 6-6 नौकर रखे हुए हैं और 3-4 डिलीवरी बॉयज रखे हुए हैं, और 200 से 500 बंदों का खाना हर वक्त बनता है। सुबह भी बनता है, लंच में, शाम को डिनर में भी बनता है, और सुबह नाश्ता भी देते हैं। और क्या क्वालिफिकेशन है? द ओनली थिंग इज दे हैव सेंस्ड एन अपॉर्चुनिटी कि इस सिटी में बच्चों की फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत है, जो पढ़ने आते हैं, जो कोई यहाँ पीएमटी का इम्तिहान देने के लिए आकाश जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने आते हैं, या कोई आईएएस की तैयारी करने आया हुआ है, या कोई बच्चा ऐसे ही लॉ कहीं कर रहा है, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई किसी और चीज की कर रहा है। तो ऐसे हजारों बच्चे हैं, और उनके माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे को घर का बना हुआ अच्छा खाना, एंड एट ए वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस। एंड सिंस इट इज होमली फूड, वो बच्चा आंटी को फोन भी कर सकता है, आंटी मुझे ये मिर्च वाला नहीं चाहिए, मेरा गला खराब है। वो कहते हैं हाँ बेटा कोई नहीं, तेरा पेट खराब है तो हम तेरे लिए दलिया भेजेंगे, तेरे लिए साबूदाना भेजेंगे। बच्चा इज वेरी हैप्पी। वेयर एज रेस्टोरेंट्स आर नॉट डूइंग ऑल दिस। वो अपना चालू धंधा उनका पूरा का पूरा, एक डोसा 100 रुपए का दे रहे हैं, 50 रुपए का दे रहे हैं, 80 रुपए का दे रहे हैं। तो कभी खाने के लिए तो ठीक है, once in a while you can pay 100 rupees, but every day, in every lunch, every dinner you will not pay. You will want that homely food is served to you with 3-4 chapatis, some rice, some dal, some sabji, sometimes something salad वगैरह. It is sufficient for you. पर घर का खाना, ना मिर्च ज्यादा है, ना तेल ज्यादा है, बिल्कुल बढ़िया, ना उसमें मैदे की रोटी है,
गेहूं की रोटी वो देते हैं आपको। सो दे गिव यू वेरिएशंस आल्सो, जैसे आप चाहेंगे। तो उनको 40 रुपए में वो खाना मिल जाता है। सो चाइल्ड इज वेरी हैप्पी, द पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी। अच्छा, इनका धंधा चल पड़ा। अगर एक बच्चा भी उनको 3,000 रुपया महीना दे रहा है, तो मान लो अगर 100 बच्चे भी हैं तो 3 लाख का धंधा है भाई। 3 लाख में से 50,000 से 1 लाख तो आराम से बच जाता है। और करना क्या है, आप 5 लोगों को नौकरी भी दे रहे हो, 5 सर्वेंट्स जो बेचारे इधर उधर से आए हैं, 5 बंदे जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, कहीं उनको एक स्कूटर या साइकिल दे दो, वो बांटना शुरू कर देते हैं आपका डब्बा। उनको भी नौकरी मिल गई, बच्चों का काम हो गया। अब इसमें ना कोई इंजीनियरिंग है, ना कोई मैनेजमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट है लाइफ की। आपको खाना चाहिए, घर जैसा खाना चाहिए, बढ़िया चाहिए। आप होटल में जाएं, खाना महंगा भी होता है, उसमें तेल भी ज्यादा होता है, मसाले भी ज्यादा होते हैं, हाँ टेस्टी बड़ा होता है, प्रेजेंटेशन बड़ी होती है। भाई घर में आप कोई आप पेपर नैपकिन से थोड़ी मुंह साफ करते हो। घर में क्या आप रोज सूप पीते हो? घर में तो वही दाल रोटी होती है। वो उन्होंने सेंस कर लिया। मार्केटिंग का मेन प्रिंसिपल, सेंस, सर्व एंड सेटिस्फाई, एंड उनका बिजनेस चल पड़ा। कोई उन्होंने बीटेक नहीं किया, कोई वो हाईटेक मशीन नहीं यूज कर रहे, हाँ काम बढ़िया कर रहे हैं, दे आर डूइंग ए गुड जॉब। तो अगर आप ये आइडिया भी बन जाता है, और अगर आप ये काम शुरू में करते हैं 30, 40, 50, 100 बंदों के लिए, आपको उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस इन ए वेरी गुड वे, स्टार्ट इट। इसमें बुरा क्या है? आप योगा करते हैं, आजकल योगा का कितना क्रेज है, योगा सिखाना शुरू कर दीजिए। आपको एक जगह चाहिए जहां आपको सिखाने के लिए, बस जगह का अरेंजमेंट कर लीजिए, किसी मंदिर, गुरुद्वारे, पार्क। या एक बंदा तो इतना स्मार्ट है, उसने कहा जी कि मैंने ये कहा है अगर किसी के पास बड़ा घर है तो मैं उसके 2 बंदों को फ्री में सिखाऊंगा, ताकि 5 साथ के नेबर बंदे उसके घर में आकर कर ले। उन 5 से फीस लूंगा, इन 2 को फ्री में कर दूंगा, जगह फ्री होगी। उसका धंधा चल निकला। अगर एक बंदे से वो 1000-1200 भी लेता है तो 5-6 हजार उसको 1 घंटे के मिल गए, विद ओनली 5 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स। और अगर उसके स्टूडेंट 10 से 15 हो जाते हैं तो ही और शी इज मेकिंग 10 to 15,000 पर आवर। और अगर 500 रुपए भी फीस रखते हैं आप और 20 स्टूडेंट आ जाते हैं, 10,000 1 घंटे के मिल रहे हैं आपको। और अगर आप दिन में 5-6 घंटे भी रहते हैं तो आपको देखो कितने पैसे आ गए, 50-60 हजार बन गए 5-6 घंटे। और धंधा आपका अपना है, लोगों की आप सेवा कर रहे हो। जो भी आपके पास आ रहा है आपको सर सर सर, मैम 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 कह रहा है, हाथ जोड़ता है। प्रोवाइडेड यू शुड हैव द बेसिक स्किल्स, यू शुड नो व्हाट इज बेसिक योगा। एक जगह अरेंज करनी है और शुरू में 2, 4, 5 बंदे लेकर आने। बाकी तो अगर काम अच्छा है तो लोग अपने आप ही आने शुरू हो जाएंगे। अगर साथ वाला 1000 रुपए फीस ले रहा है, आप 500 रुपए में शुरू कर दो। You can start this business. People have made a huge success out of it. Huge success. मेरे पास एक बच्चा नौकरी के लिए आया करता था, अरुण। उसकी वाइफ किसी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट थी। अरुण वाज एन MBA, दोनों की शादी हो गई। 29 साल का अरुण था, 27-28 साल की उसकी बीवी थी। और लड़का एक दिन मेरे पास आया, कहता सर मैं थक जाता हूं, दिन में कोई 100-150 किलोमीटर साइकिल स्कूटर चलाता हूं, कलेक्शंस पर जाता हूं, मेरा मेन काम कलेक्शंस पर होता है, पैसे इकट्ठे करने, लोग बड़ा तंग करते हैं सर, पेमेंट नहीं देते। किसी कंपनी के लिए काम कर रहा था, फिर मुझे बात से बड़ी झिड़कें पड़ती हैं। तो मैंने कहा तू कोई अपना काम क्यों नहीं शुरू कर लेता? सर मैं क्या करूंगा, मैं टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं हूं। पर उस लड़के का ना फिटनेस में बड़ा इंटरेस्ट था। मैंने कहा तू फिटनेस का ही कोई शुरू कर ले, जिम बना ले। सर जिम में बड़ा खर्चा होता है। मैंने कहा यार तू कैलकुलेट तो कर, फाइनेंस तेरा स्पेशलाइजेशन है। मैंने कहा तू पहले हाई फाई मशीन्स मत ले, साधारण मशीनरी ले ले जिसमें ज्यादा खर्चा मत। यूनिवर्सिटी एरिया में उसने एक बिल्डिंग किराए पर ली, उसका 3rd टॉप फ्लोर, 25,000, आज से 11 साल पहले 25,000 पर मंथ किराया। इट वाज ह्यूज अमाउंट 11 साल पहले, इन 2005। और साधारण सी इक्विपमेंट। मैंने कहा तू देसी इक्विपमेंट ले, रेगुलर इक्विपमेंट ले ले, बहुत महंगी ना ले, ब्रांडेड मत ले। सोच ये सिर्फ 2-3 साल निकालेगी, पर उसमें अपनी कॉस्ट रिकवर कर ले। लोग ले रहे थे 1000 रुपया उस जमाने में, 1000-1500 पर मंथ। मेरे पास आया, मैंने कहा यार तू 300 से स्टार्ट कर, फर्स्ट 5 पीपल हु कम 300।
उसके बाद 500, फिर 700। उसका तो जी जिम भर गया, जगह ही नहीं है। फिर धीरे धीरे उसने 6 महीने में एस्टेब्लिश हो गया, धीरे धीरे उसने रेनोवेशन भी उसमें अच्छा इंटीरियर बनाने शुरू कर दिए, कलर कॉम्बिनेशन शुरू कर दिए। उसके पास सिर्फ पंखे थे, एसी उसी कुछ नहीं था, फ्लोरिंग उसने अच्छी कर ली। अब उसके पास 4-5 जिम है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी, सो यू कैन मेक इट अ बिग अफेयर। देयर इज अ डॉक्टर इन पूना, ही इज अ क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर, ही वाज रनिंग हिज ओन प्रैक्टिस। अब उसको ये था कि लोग जैसे ब्यूटी केयर में बड़ा इंटरेस्टेड है, ए डॉक्टर वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ ब्यूटी केयर, ब्यूटी सैलून्स बना दी उसने ट्रैवलिंग ब्यूटी सैलून्स बना दी। जैसे वो एक्टरों की होती है ना, सिनेमा स्टार्स अपनी ब्यूटी सैलून रखते हैं, साथ में वो ट्रैवल करता है स्टूडियो, उसने वो बना दी। अब आपको कस्टमर को उसके स्टूडियो में आने की जरूरत भी नहीं है ब्यूटी सैलून की, वो सैलून में 4-5 बंदे विद सम इक्विपमेंट, दे विल गो, यू गो देयर, आपके घर के पास आ जाएंगे, वहीं आकर आपका कर देंगे। ही इज ए ह्यूज सक्सेस। सो इफ यू सी फ्रॉम मनी पॉइंट ऑफ व्यू, he is still serving the society, he is doing a big job for them, so you can do this। टाइम कितना हो गया सर? हमारे पास अब कितना टाइम है? All right, now I will just tell you my own story, what I did। अब स्टार्टिंग मैंने टीचिंग से स्टार्ट की। At the age of 26 I was an associate professor, at the age of 29 and a half I got full professorship। I worked in a corporate sector as a manager in human resource development। At the same time, I went to attend an interview for the post of associate professor cum convener industrial management in IIT Bombay, Powai। वहां मैंने पास भी कर लिया टेस्ट, मेरी PhD नहीं थी तब। तो that professor told me you are not a PhD। मैंने कहा सर PhD नहीं हूं, पर मेरे पास इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है। उस जमाने में लोग मैनेजमेंट के MBA वाले टीचिंग में नहीं जाते थे, बिल्कुल नहीं जाते थे। तो मैं वहां पहुंच गया, उन्होंने मेरा सेमिनार करवाया, इंटरव्यू लिया, पर जब सैलरी देते हैं तो सैलरी उतनी ही देते हैं जितनी टीचर्स को मिलती थी। उस जमाने में बहुत कम मिलती थी, 1500 से 2500 का ग्रेड, 1500 से 2000 का ग्रेड एसोसिएट प्रोफेसर का। तो मैंने कहा सर मेरे को तो हाउस रेंट अलाउंस पूरा मिलता है, इतना मिलता है, फलाना है ये। एनीवे व्हाटएवर इट इज, आई स्टार्टेड समथिंग ऑफ माय ओन। शुरू में कितनी मुश्किल आती है, आसमान में उड़ रहा था, एकदम जमीन पर गिरा, खड्डे में गिरा, हड्डी पसली टूट जाती है, कोई साथ नहीं आता, सोशल स्टेटस 0 हो जाता है, कोई नहीं पूछता। 5-6 साल रिकवर होने को लगते हैं, जबकि उन 5-6 साल में आपके क्लास फेलोज, बैचमेट बहुत आगे निकल जाते हैं। अगर लीनियर प्रोग्रेशन भी कर रहे हैं ना, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, वो भी बहुत आगे निकल जाते हैं। आई वॉज फीलिंग, मेरा सोशल सर्कल बिल्कुल कट ऑफ हो गया, इनकम 0 हो गई, ऊपर से शादी कर ली, सोशल स्टेटस में बड़ा फर्क आ जाता है। इकोनॉमी जब आपकी टूट जाती है तो आप बिल्कुल, आपको चेक नहीं मिलता मंथली, उसकी बजाय आपका मंथली एक्सपेंस शुरू हो जाता है, इतना खर्चा आना ही आना है, यू हैव टू पे 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 पे। और अगर बिजनेस चल पड़ा तो जितना आता है उसका 50% खर्चे में चला जाता है। हाँ, जब आप 7-8 साल में एस्टेब्लिश हुए, आपकी एडवर्टाइजमेंट्स आने शुरू हो गए, शोहरत बन गई, नाम बन गया, फिर सभी कहते हैं अरुण वाज माई क्लास फेलो, ही वाज माई नेबर। अरुण ये मेरे फ्रेंड का बेटा है, ये मेरे वाइफ है, ये उसकी बहन है, इसको लगवा दो, इसको वहां कर दो, इसका ये कर दो, बस लोगों की सेवा करनी शुरू कर दो, वो भी फ्री में। दैट इज हाउ दे कम टू नो अबाउट। So if you are willing to start something of your own, it is not all rosy। जूते बहुत पड़ते हैं, फेलियर बहुत होता है, और सबसे ज्यादा फेलियर ये होता है कि आप एक डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। आपने वो पढ़ा है ना, कॉग्निटिव डिसोनेंस, फेलियर 1, फेलियर 2, फेलियर 3, फेलियर 4, फेलियर 5, एंड a stage comes you think I am a flop, जबकि आप फ्लॉप नहीं होते, एंड यू गिव अप, यू हैंग योर शूज।
दौड़ना ही बंद कर देते हो, एंड यू गो इनटू अ डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन. सो यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटिंग. अगर आप में वो डिटर्मिनेशन है जिसको डॉगिडनेस कहते हैं. डॉगिडनेस क्या है? एक गद्दी कुत्ता होता है, पहाड़ी कुत्ता. पहाड़ी कुत्ते का काम क्या है? वो शेफर्ड्स रखते हैं, गडरिया रखते हैं, और 300 भेड़ों को लेकर जा रहे हैं, गाय भैंस को लेकर जा रहे हैं ग्रेजिंग के लिए, चरवाने के लिए जा रहे हैं. तो उसके लिए, ताकि ये 200-300 जो झुंड है आगे पीछे ना हो जाए, तो 2-3 कुत्ते रखते हैं साथ. उनको कहते हैं, वो खास वहीं के कुत्ते होते हैं, उनको गद्दी कुत्ता कहते हैं, गद्दी, शेफर्ड डॉग्स. उस कुत्ते की पहचान क्या है? वो जिस जगह अपने दांत गाड़ देता है ना, मान ले उसने आपकी टांग के ऊपर अपने दांत गाड़ दिए, अब मैं अपनी आरी के साथ, छुरी के साथ उसकी गर्दन भी काटूंगा ना, मैं उसकी गर्दन काट दूंगा, पर वो अपने दांत आपकी टांग से नहीं निकालेगा. दिस इज कॉल्ड द डॉगिडनेस. अगर आपका डिटर्मिनेशन उस शेफर्ड डॉग की तरह स्ट्रांग है, बिल्कुल वज्र है, सीमेंट, नहीं टूट सकता, अटूट है, अडिग है, गो फॉर ए बिजनेस ऑफ योर ओन. पर अगर आप छुई मुई हो, किसी ने जरा हल्का सा भी कह दिया और आपका रंग बदल गया, आपको अच्छा नहीं लगा, then don't do your business. You are not cut out for it. So have that determination, that doggedness of that dog, then only you will make it. Otherwise, go for a job and continue to tell your students, go for a job. Keep on saying, yes sir, good morning sir, thank you sir. And at the end of 1 year, sir, what about my performance appraisal sir? Sir, my increment sir. Sir, my promotion sir. वही जिंदगी में 2-3-4 प्रमोशन मिलने हैं, and that is the end of life. और फिर लोग कहते हैं जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो अपना काम शुरू करूंगा. अरे भाई, जब तक तू जवान था तब तक तो तूने कुछ किया नहीं, अब क्या करेगा? Now you are good for nothing. Acha, this was at a lower level, local level. Now see at national level. Everybody is familiar with the brand name Naukri.com. But do you know this story? This man, Sanjeev Bikachandani, the owner of this company, he is a product of St. Columba's School in Delhi, one of the best schools. He is a product of BA Economics from St. Stephen's, one of the best known colleges in India. He worked in an advertising agency, Lintas, after his BA. Lintas is a very big name in advertising for first 2 years. Then he went for his MBA to the most coveted IIM Ahmedabad. 89 he passed out. पास करने के बाद वो आजकल का जैसे जो कंपनी है ग्लेक्सो, उस जमाने में इसको HMM कहा करते थे, हिंदुस्तान मिल्क फूड मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, हॉर्लिक्स वाले. 1 साल नौकरी किया उसने इसमें. 1 साल नौकरी के बाद उसने कहा नहीं, मैंने तो कुछ अपना करना है. हिज वाइफ, शी वर्कड फॉर नेस्ले. ही स्टार्टेड समथिंग ऑफ हिज ओन, which for first 8 to 9 years was not a success. He could not give any salary to himself in first 8 or 9 years. They were not breaking even. और अब Naukri.com का क्या नाम है, किसकी जुबान पर नहीं है? जिसको भी नौकरी चाहिए या जो कोई भी टीचर है वो यही करता है. तुमने अपना डाटा Naukri.com पर डाला, and see who his competitors are. Competitor nearest is Monster and second is Times Jobs. और Times Jobs कितना बड़ा established group है, 150-200 साल पुराना. Even they are unable to challenge him. He is occupying more than 60 to 80% of job market in India. And see, in first 9 years, he operated from one room, वो भी अपने फादर के घर में, सर्वेंट क्वार्टर्स के ऊपर एक कमरा, जिसके लिए वो 800 रुपए किराया देता था अपने बाप को. And he made it a big success. After 9 years, पहले 9 साल झक, बिल्कुल कहते हैं ना झक मारी. And he continued to ride a scooter for first 9 years. जबकि उसके जितने भी कोलीग्स थे, क्लास फेलोज थे, they were leading royal lifestyles. आपका सोशल स्ट्रक्चर ही बदल जाता है, सोशल कनेक्शन ही टूट जाते हैं, क्योंकि
You cannot afford to go in a big car. You cannot afford to go to a big restaurant, a branded restaurant, or a bar, or a pub, or a disco, क्योंकि भी पैसे लगते हैं. हाँ, जो लड़का IIM से निकला है और उसने 8-9 साल नौकरी कर ली, उसकी सैलरी हो जाती है, कंपनी की बना पर वो बड़ी ऐश करता है, उसको हर महीने एक पक्का चेक मिल जाता है. पर यहाँ तो लोगों को सैलरी देनी पड़ती है, कंप्यूटर ऑपरेटर को सैलरी देनी पड़ती है, पीएन को देनी पड़ती है, एडवर्टाइजिंग की सैलरी है, स्टेशनरी की है, स्कूटर गाड़ी चलाने का है, बिजली पानी है. अगर एसी भी चलाते हो तो आदमी सूंघ सूंघ कर चलाता है कि मेरा इतना बिल आ जाएगा. बिकॉज एवरीथिंग यू टच इज गोइंग टू कॉस्ट यू मनी. आई रिमेंबर दैट आई यूज्ड टू पे टी बिल. जो भी लोग आते थे उनको चाय बुलाते थे दिन का. उस जमाने में 90s आई यूज्ड टू पे, कोई हफ्ते में वी यूज्ड टू पे कोई 1000-1500 रुपए चाय का बिल देते थे, जबकि चाय 1-1.5-2 रुपए की आती थी उस जमाने में. अब तो 8-10 रुपए की आती है, तब 1-1.5 रुपए की आती थी. हर इतनी चाय हमारी आती. एंड यू कैन जस्ट इमेजिन, हम महीने में 7-8 हजार की चाय ही पिला देते थे लोगों. And it is not to be counted, it is just a cup of tea, simple cup of tea, no biscuits, no attachments, nothing. So if you want to make it, Naukri is today very big thing, but see the grueling process from which it has come up. Now I'll just tell you about one of my classmates. मैंने यहाँ से engineering की, मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, very short statured, Anil Jain. He was from UP. His father was teaching in some inter college in UP. This gentleman did his BE with me. He was a BSc also. After BSc he came. 2 साल बड़े थे मुझसे. Engineering की. उस जमाने में कंप्यूटर सारी यूनिवर्सिटी में एक था, वो भी बड़े वाला ह्यूज. कंप्यूटर होता ही नहीं था. He did a project, computerized design of so and so machine. उस जमाने में he was so far sighted. He did it. Then he joined Bharat Heavy Electricals. वहीं दिल्ली में उसने पार्ट टाइम फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से MBA किया. फिर वो कहता था कि अरुण मैं थक गया सरकारी नौकरी करके भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की. He went to Bombay, worked for a company. And there he decided that one day he will buy the same company. Then he persuaded 20 of his friends. उन्होंने अपने पैसे इकट्ठे किए, अपनी बीवी की ज्वेलरी भी बेची, काफी कुछ पैसे छोटे छोटे इकट्ठे करके शेड लिए. शेड के नीचे उन्होंने मशीनें डाली एंड ही स्टार्टेड मेकिंग पैकेजिंग मटेरियल. जैसे ये बड़े बड़े ढोल होते हैं ना नीले रंग के, जिनमें आप मटेरियल हैंडलिंग का काफी सामान रखते हो, जैसे पानी वगैरह रखते हो स्टोर करने के लिए, स्टोरेज के लिए वो बनाता था. ही सेज वी स्टार्टेड मेकिंग ऑन आवर ओन. देन धीरे धीरे बंदे रखे. नाउ हिज टर्नओवर हैज क्रॉस 1800 crores. 1,800 crores is a huge amount. It's a listed company. And see from where he started. He says, I failed twice in that business, but I never lost hope and I kept on doing. I met his wife and she told me one thing. She says, this man is never at home. He's always traveling. He's always traveling. तो सेक्रीफाइस बड़ा है, फैमिली को बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है. ही हैड नो स्पोर्ट, नथिंग, वेरी हम्बल बैकग्राउंड. His one brother, I think he was a chartered accountant. This person, he did his engineering. Father was a humble school teacher, a college teacher, inter college. And see what he has made it, a huge success. So I'll just ask you people, check in life what is that you value the most. देखो अपना काम करके आपको क्या मिलता है, मुझे क्या मिला. To my mind, the greatest thing in life is freedom. आप कितने बड़े भी अफसर बन जाएं, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी ना किसी के आगे आपकी मुंडी झुकती है. यस सर करना ही पड़ता है. आप चीफ सेक्रेटरी ऑफ ए स्टेट भी बन जाए ना, IAS अफसर के हाईएस्ट रैंक चीफ सेक्रेटरी ऑफ ए स्टेट होता है, वो भी एक चीफ मिनिस्टर के आगे जाकर यस सर ही करता है. और चीफ मिनिस्टर क्या होते हैं आपको पता ही है. कई स्टेट्स में 9th पास डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 8वीं पास है, अंगूठा छाप है. ये ऐसे ही लोग आपके डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, और आपको उनको यस सर करनी पड़ती.
So the greatest thing in life to my mind is freedom, which you get when you are the boss of your own business. हाँ, पर उसकी प्राइस बहुत है. अगर फेलियर है, the whole responsibility is yours. वो सारा जितनी भी बदखोई है वो सारी आपकी अपनी है. अगर you are a success out of it, take the example of Naukri.com, Mr. Bika Chandani, Mr. Karsan Bhai of Nirma. They are huge successes. You can make it. But if you are only preparing students for tomorrow's job seekers, produce them. Create people who are job creators. मैं तो कहता हूं वो बंदा भी अच्छा है जो टिफिन सर्विस चंडीगढ़ में या किसी बड़े शहर में पैदा कर रहा है और 200-300 भूखों को रोज खाना खिलाता है और 15 से 20 बंदों को फुल टाइम जॉब दिया हुआ. कोई किचन में काम कर रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई साइकिल मोटरसाइकिल पर जाकर वो टिफिन के डब्बे बांट रहा है. ही इज डूइंग अ बिग जॉब. मैं तो कहता हूं वो लड़का बड़ा अच्छा है MBA वाला जिसने अपने फिटनेस के 5 सेंटर खोल लिए. आज नहीं तो क्या होता, किसी कंपनी में ब्रांच मैनेजर लगा होता, आज जयपुर में शिफ्ट कर देंगे, कल उसको देहरादून में शिफ्ट कर देंगे, चौथ को लखनऊ में, और जब निकालना होगा तो कहेंगे अभी तुझे हम विजयवाड़ा शिफ्ट कर रहे हैं. वो कहेगा नहीं जी मेरी तो फैमिली नहीं जाती, मैं नौकरी छोड़ देता हूँ, कंपनी ही छोड़ दूंगा, दूसरी मैं नौकरी ढूंढ लूंगा इसी शहर में. सो यूज, और उस कंपनी को उसी हाफ रेट में या 2/3 रेट में बंदा मिल जाएगा, वो अपनी बचत कर लेंगे. कनेक्शन आप बनाएंगे वो कंपनी के लिए. दिस इज हाउ कंपनीज ऑपरेट. सो व्हाई नॉट यू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन. तो इवन इफ यू आर एज ए प्रोफेसर in some institute, you can do your part-time business. Why not? अब देखिए बोस सिस्टम्स कितना बड़ा सिस्टम है. बोस के जो स्पीकर्स हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स हैं, they are highest in quality world over. And this is an Indian who studied in MIT in USA. उसका इंटरेस्ट साउंड में ही था. He was a faculty also, teaching electrical engineering, sound engineering, but he started his own company. And Bose system, now he is no more, but Bose system is what we know him for. आपने कभी Bose system पर अगर म्यूजिक सुना हो तो आप ये बाकी के सारी ब्रांड्स भूल जाएंगे, because he has created something unique. He was a senior professor at MIT, one of the best known institutes in technology the world over. You can do this. You can start something of your own. ऐसा अब कितने ही प्रोफेसर्स हैं who are doing their own consultations. They are doing. अब की बात कि अब तो बहुत ज्यादा हो गए. When I was studying, I remember even in our engineering college, there was a professor of civil engineering who was consulted by different governments for construction of bridges, civil engineering, and all that. He was a specialist in that. You can do that. Why not? You can start something of your own. You can do it. अब वेंकटेश्वरा हैचरीज हैं. The person is no more the one who started it. Now his daughter is running the show. It is one of the biggest companies in hatcheries in India. He was a professional in that line. They started it. अब अमूल की कहानी क्या है? दूध ही तो इकट्ठा करते थे. Dr. Kurian came from nowhere. He organized the whole group of uneducated people, semi-literate people. ग्वालों को उसने इकट्ठा किया और उसमें से भी 50% से ज्यादा विलेजर्स, लेडीज. और आज अमूल का क्या ब्रांड नेम है? यू ऑल नो अबाउट इट. यू कैन स्टार्ट. वैसे बेसिकली काम क्या करता है अमूल? ग्वाले का ही काम है ना, दूध वालों का काम है. बट ही मैकेनाइज्ड इट, ऑर्गेनाइज्ड इट, प्रोफेशनलाइज्ड इट, gave it a different brand name, a different outlook, different products, different product lines. And today you feel proud to say we use Amul Doodh, we use Amul butter, Amul cheese rings. So you can start any idea. You can start making pickles at home. You can make it big out of it. What is Rasna? Rasna is such a big success story, again from Gujarat. रस की रचना रसना, you all know that brand, that jingle. It is just with a little taste it has come. What is KFC?
KFC was started by this Colonel Sanders in USA. उसको चिकन बनाना बड़ा अच्छा लगता था, उसने एक स्पेशल बनाया और उसने बेच दिया किसी को. Finally he sold this brand name to somebody and it is now world over a big name, KFC. 400 रुपए में 8 छोटे छोटे 10 पीस देते हैं और हम कितने प्राइड के साथ खाते हैं. बेसिकली ये ढाबा ही है बेसिकली. व्हाट इज मैकडॉनल्ड्स? आलू की टिक्की 2 बंद में डालकर देते हो और क्या करते हो? बर्गर क्या देते हो? हम पकोड़े खाते हैं, वो फ्रेंच क्या कहते हैं, फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज क्या देते हैं? है तो पकोड़े, आलू के पकोड़े तले हुए. हम देसी चटनी के साथ खाते हैं, वो सॉस क्या देते हैं? वो सॉस क्योंकि वैसे पिचक कर निकलता है तो हमें जरा अच्छा लगता है, उस पर फोटो बनी होती है, ब्रांड लिखा होता है. हम ऐसे साफ मुंह कर लेते हैं, वो साथ में टिश्यू पेपर दे देते हैं. एंड यू फील वेरी वेरी हैप्पी. क्या जी, क्या बात है. अब गांव में जाओ, मक्की के दाने भट्टी पर बने हुए मिलते हैं, 5-10 रुपए दो, वो इतने दे देते हैं आपकी झोली में यूं ही. या बहुत सोफिस्टिकेटेड हो तो रुमाल में ले लेते हो. आप यहाँ पिक्चर देखने जाओ, पॉपकॉर्न देते हैं इतने से, 75 रुपए के जी, 80 रुपए के, 90 रुपए के, 40 रुपए तो मिनिमम रेट है उनका. हाँ, उसमें वो लिख देते हैं बटर्ड. बटर मसाला कहाँ होता है? हल्दी डालकर पीला रंग, वही मसाला जो हम डालते हैं. It's a big success. So it produce people who are going to produce jobs for others. Give them that seed. अभी कल मैं एक मूवी देख रहा था, वो क्या है, द जायंट स्लेयर. द जायंट स्लेयर कौन सी मूवी है? डेविड द जायंट स्लेयर कौन सी है? आप गूगल पर चेक करो, द जायंट स्लेयर. जायंट स्लेयर उससे पहले नाम है. ही गेट सम सीड्स फ्रॉम ए प्रीस्ट. वो सीड लगाओ तो एक बेल चलती है यहां से जमीन से और ऊपर आसमान में हेवंस तक पहुंच जाती है. So you just put these seeds in the minds of these children who happen to be today your students. Tomorrow they will not be employees, they will be employment creators, employment generators. क्या नाम है? जैक द जायंट स्लेयर. ये कहानी है कि एक जैक बच्चा है, बड़ा इनोसेंट सा, 18-19 साल का. उसको कुछ सीड्स मिल जाते हैं. वो सीड्स ऐसे हैं जिसको लगाने से बेल बनती है जो ऊपर क्या कहते हैं, हमारा हेवंस तक जाती है. और वहां जाकर वो जितने भी जायंट्स हैं, जितने भी डीमंस हैं, उनको मार देता है और वहां का राजा बन जाता है और रानी से शादी कर लेता है. तो यू कैन क्रिएट दोज मैजिक सीड्स, गिव देम टू योर स्टूडेंट्स. सिर्फ उनके मार्क्स मत देखिए. आई मे नॉट बी वेरी गुड इन इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स or in electrical circuits, but I may be very good in management. I may be very good as an organizer of a trip. And these are the people who are running organizations like OBIBO, IBIBO, OYO and all that. Make my trip. ये कहाँ से कहानियां आ गई? इन्हीं लोगों ने बनाई है. Who their teachers never told them that you are good. इनके पास कुछ भी नहीं है. अब देखिए ये जो है ओला और उबर टैक्सीज, you will be surprised that these companies don't own a single cab of their own. इनकी अपनी एक भी टैक्सी नहीं. उनके पास सिर्फ एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, एक दिमाग है. और हजारों लोग जिनके पास 5 लाख से 10 लाख रुपए हैं, वो अपनी गाड़ी लेते हैं, अपना ही परमिट कटवाते हैं, अपना ही टैक्सी नंबर लेते हैं, अपना ही सब कुछ करते हैं और इनको रिक्वेस्ट करते हैं, सर मैंने नई गाड़ी ले ली है, मुझे ओला का कैबी बना दो. और सारा दिन उनके इंस्ट्रक्शन को वेट करते हैं. एक वहां उन्होंने अपना वो मोबाइल रखा होता है आगे, वहां इंस्ट्रक्शन आती है, yes Mr. Kapoor is at NITTR, he needs a cab from there, he is going to Mount View over there. Okay sir, फटाफट बाहर आ जाएंगे. Then they will give me a call, Mr. Kapoor, I have reached, I have parked my car next to the security, please come. Sometimes they even 6 लाख की उसके पास गाड़ी है, 7-8 लाख की पड़ती है डिजायर अगर है तो. वो आपका सामान भी उठाएगा, आपको वहां छोड़ेगा भी, आपको चेंज भी देगा, फिर भी कहेगा हैव ए नाइस डे सर, थैंक यू फॉर कम ट्रैवलिंग विद अस सर. क्योंकि
दिमाग उस बंदे के पास, पैसे हैं दिमाग नहीं है, दिमाग ओला वाले के पास है, दिमाग ऊबर वाले के पास है। वो सिर्फ अपने, उसने 4-5 कंप्यूटर रखे हुए हैं, ऐसा एक मिनी स्टूडियो बनाया है, 2-3 लड़कियां 2-3 लड़के रखे हुए, बस सारी दुनिया उन्होंने घुमाई हुई है। सारी दुनिया घूम रही है, कोई यहां से मोहाली जा रहा है, कोई पंचकूला जा रहा है, कोई एयरपोर्ट से वापस आ रहा है, कोई मांग रहा है कि मैंने फलाना पीवीआर थिएटर जाना है, मुझे वहां ले जाओ। सारे लोग खुश हैं। गाड़ी की उनकी एक भी नहीं है। 2 पैसे की इन्वेस्टमेंट जो भी है टेक्नोलॉजी में, मैनेजमेंट में, ह्यूमन रिलेशंस में। इनको इतना है, अच्छा रात को अगर लेट हो गए तो उनको पेनल्टी पड़ती है अगर रिफ्यूज करते हैं तो। इफ दे रिफ्यूज ए राइट अ कस्टमर, दे आर पेनलाइज्ड। So you can come out with such new ideas every day. To create, be creative. That is most important. And to be creative, study your students as human beings. Tell them what is unknown to them. Like one of my class fellows from school days, he's a doctor now. One day he told me, he said, Arun, तूने अपना सारा टाइम वेस्ट किया यार। मैंने कहा क्यों? कहता तेरी जो अच्छी क्वालिटी है वो तो तूने यूज ही नहीं की। मैंने कहा क्या है यार? बचपन का दोस्त है, स्कूल में। ही सेज कपूर, तेरे में जो चीज है ना वो किसी सब्जेक्ट में नहीं आती। तू किसी बात पर भी बात कर सकता है और घंटों बात कर सकता है, एंड वी विल ऑलवेज लूज, वी विल ऑलवेज लूज टू यू। कहता तू उसका 5% भी यूज नहीं करता। तो मैंने कहा क्या करूं यार? प्रवचन देने शुरू कर दे। बहुत बड़ा बिजनेस है, इट्स ए ह्यूज बिजनेस। हर कोई तेरे चरणों में लौटेगा। So tell your people what is good in them. As a teacher, it is your duty to tell your student. Do one-to-one counseling. जैसे स्कूल में होती है ना पेरेंट टीचर मीटिंग, talk to them. Maybe out of 100, 5-10 फूल खिल जाएंगे। Anyway, if you have any queries, any questions, any remarks, any objections, any updates or modifications, you are welcome to share. Hello. Yes, please. So first of all, तो आपका जो मतलब हमने सुना वो बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। Thank you. And sir, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि to start a business, is it good to invest our money or to take loan from the bank? मैम, जब आप अपना खुद का पैसा जलाओगे ना तो लर्निंग ज्यादा होगी। जब आपकी खुद की उंगली जलेगी ना, जब आप पहली दफा किचन में खाना बनाते हो तो किसी और की हाथ तो डालते नहीं, खुद ही रोटी बनाते हो, खुद ही हाथ लगता है फ्राइंग पैन पर, खुद ही जब आप अंडा भी फ्राई करते हो तो तेल उछलता है, आपके छींटे पड़ते हैं। तो जब वो आपको 1-2 छाले पड़ेंगे ना तो लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम आप पोना यूज करोगे, आप लकड़ी का हैंडल यूज करोगे, थोड़ा दूर हट कर करोगे। तो आई विल सजेस्ट कि शुरू में अगर आप अपनी खुद की मनी बर्न करते हैं, वो लर्निंग तो आपकी दिमाग में ऐसे चिपक जाएगी, आप कभी भूलोगे ही नहीं, कभी नहीं भूलोगे। योर गुड नेम प्लीज? मीनू भाटी फ्रॉम GIT, Global Institute of Technology, Jaipur. All the best. Do burn your own hands. The learning is the highest. One more thing, sir. सर आपने इतने सारे एग्जांपल्स दिए, सबकी बिजनेस की सेट हुए, कहीं पे भी मतलब अब अगर हम लोन अप्लाई करते हैं फॉर एग्जांपल तो दे आस्क फॉर रिपोर्ट, एंड इन रिपोर्ट वी हैव टू शो द मार्केट सर्वे, बट कहीं पे भी मार्केट सर्वे अभी जैसे आपने जो एग्जांपल्स दिए कहीं पे भी मुझे नहीं लगा कि मार्केट सर्वे उन लोगों ने किया। They only watch the market or then grab the opportunity. देखिए, अगर आप किसी भी चीज को करना चाह रहे हैं, जब आप अपना पैसा खुद का लगाएंगे ना तो आप बड़े ध्यान से लगाएंगे। तो ऐसे ही बैंक जो आपको लोन दे रहा है वो अपना खुद का पैसा आप पर लगा रहा है, तो वो दाम वहीं खेलेंगे, वहीं दाम खेलेंगे जहां उनको कुछ आता हुआ दिखाई देगा। राइट? तो बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अगर आप मुझे पैसे लोन पर दे रहे हैं, मान लीजिए मैं मीनू भाटी के पास से 5 लाख रुपया लोन ले रहा हूं और मीनू भाटी इंडियन बैंक में मैनेजर लगी हुई है, तो मीनू भाटी क्या देखेगी? वो यही देखेगी ना कि अरुण कपूर मुझे पैसे लौटा भी पाएगा 2 साल में, 3 साल में। बस यू पुट योरसेल्फ इन दैट पर्सन्स प्लेस, आपको आंसर एकदम मिल जाएगा।
अगर मीनू भाटी को लगे कि यार ये तो पैसे मुझे 6 महीने में ही लौटा देगा, वो कहेगी जी आप 5 क्यों लेते हो, 25 लाख लो हमसे हमें फायदा होगा। तो योर बिजनेस आइडिया शुड बी वेरी स्ट्रांग, इसमें से रिटर्न आनी शुरू हो जाए तो वो एकदम नहीं होगा। मान लीजिए मैं योगा क्लास भी शुरू करता हूं, टिफिन क्लास भी टिफिन का भी करना शुरू करता हूं काम। अगर मेरे पास पहले 50 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट हैं, तभी मैं चैलेंज कर सकता हूं ना कि मैं 200 स्टूडेंट रख लूंगा। तभी मैं कह सकता हूं कि मेरे पास अभी 50 लोग खाना खा रहे हैं, तो मैं जी 500 नहीं तो 1000 का कर रहा हूं, इसलिए लोन ले रहा हूं। तो आपको फेथ आएगा कि 50 है तो 50 के 100-150 तो कर लेगा, 1000 थोड़ा सा लंबी छलांग लगा रहा है। हाँ, 1000 3-4 साल के बाद हो सकता है, पर 100-150 कर लेगा। तो मूव इन स्टेप्स। जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हैं ना मैम घर में, तो जो तो आदमी एक एक सीढ़ी का चढ़ता है वो तो आराम से पहुंच जाता है। जो आदमी 2-2 3-3 सीढ़ियां चढ़ता है वो फिर किसी क्लिनिक या अस्पताल में मिलता, वो भी टांग पकड़े हुए, बाजू पकड़े हुए। तो थोड़ा इत्मीनान रखिए और धीरे धीरे बढ़िए। Anybody else, please? Yes, sir. Oh. Yeah, good morning, sir. Good morning. I have one question, sir. बताइए। Is this good that we should start a part-time business? Why not? Why not? शुरू तो करो। बेसिकली तो शुरुआत करनी है ना, शुरू करो। Because every time we have a sense that if we are failure, then we have a job at least. सर, आप फेलियर का नाम छोड़ दो। आपने स्विमिंग आती है आपको? No, sir. आपने स्विमिंग करते कभी स्विमिंग पूल पर गए हैं? Yes, sir. Yes. स्विमिंग पूल टीवी में तो देखा ही होगा। Yes, sir. अब ओलंपिक्स आ रहे हैं तो स्विमिंग पूल जरूर देखना, कम से कम जरूर देखना, आपको बड़ा मजा आएगा। वहां पर ना एक डाइविंग बोर्ड होता है, एक होता है 2.5 फुट ऊपर स्विमिंग पूल से, एक होता है 7 फुट ऊपर। जब भी आप वहां ऊपर चढ़ते हुए उन लोगों को देखेंगे ना डाइव करते हुए, डाइव मतलब नीचे छलांग मारना। Yes. समझ रहे हो? Yes, sir. आपने किसी को करते डाइव मारते हुए देखा है? Yes, sir. अगर आप में वो दम है तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप में दम नहीं है, मैंने कई लोग देखा ऊपर जाते हैं, डाइविंग बोर्ड पर आ जाते हैं, पर जब छलांग मारनी होती है ना, हालत खस्ता हो जाती है। तो आप जो भी पहली बारी डाइव मारता है उसको कहीं ना कहीं तो पानी टकराएगा, परफेक्ट तो कोई नहीं मारता। Yes, sir. आपने कभी घर में खाना बनाया, रोटी बनाई है? Yes, sir. तो पहली दफा रोटी बनाई थी तो गोल बनी थी? नहीं, फूली sir. थी? फूली थी? नहीं बनी थी ना फूलती है ना गोल बनती है। पर 15-20 दिन के बाद कुछ ऐसी बनती है कि खुद खा सकते हो। पहले 15 दिन लोगों से गालियां खानी पड़ती हैं वो रोटी भी नहीं खाते और गालियां देते हैं। हाँ, 3 महीने के बाद आपकी रोटी बननी शुरू हो जाती। तो डाइव करने के लिए सर योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हैज टू बी ग्रेट। बट सर जी कैपेसिटी, जैसे अश्विनी सर ने कहा, अगर उन्होंने रिस्क लिया, पीछे से कुछ कलीग्स, पेरेंट्स, अगर ये हो गया तो उससे ओवरकम कैसे करें हम? देखिए, जिंदगी आपने अपने पेरेंट्स के साथ तो बिता दी जितनी बितानी थी। अब आगे की जिंदगी में आप अपने बच्चों की सोचो, अपनी बीवी की सोचो, अपने हस्बैंड की सोचो। अब माँ बाप के साथ तो परफंक्टरी रिश्ता हो जाता है ना, कभी कभी तीज त्योहार को ही मिलना है, शादी ब्याह मुंडन को मिलना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। वो भी साल में 1-2 दफा दिवाली को चले गए, रक्षाबंधन को चले गए, नमस्ते जी, या कोई भी हो ना हो, कभी कोई बहुत बीमार हो तो चले गए। वैसे तो नहीं मिलते हम। वैसे तो यही है कि मेरी जॉब है, मैं टूर पर हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, सुबह जाता हूं, रात को आता हूं। बच्चे का जब स्कूल बंद होगा, गर्मी की छुट्टियां होंगी तो आएंगे, या छोटे मामा की शादी होगी, बड़े चाचा की होगी तो आएंगे, या बहन के लिए लड़का देखना है तो भाई की जरूरत है तो आएंगे। वो फिर सिर्फ दिखावे वाले रिलेशन नहीं होते जो फोटोग्राफ वाले। फोटोग्राफ में आप हो, जिंदगी में नहीं हो।
जिंदगी अब आपकी इस बीवी से है, इस आदमी से है, इन 2 बच्चों से है। ये एक लेडी मेरे घर रोज काम करने आती है, बर्तन मांजती है, ये मेरी 2 नेबर्स हैं, बस यही जिंदगी है। ये रिक्शा वाला है, ये बस वाला जिसके साथ मैं आती जाती हूँ या आता जाता हूँ। ये 4 दुकानें हैं जहां से मैं सौदा लेता हूँ, ये दूध वाला है, ये दुकान है, ये सब्जी वाले है, 2-3 है बस। दैट इज योर लाइफ। तो अब आप आगे का सोचिए और रिस्क लीजिए और आगे बढ़ जाइए। सर आप अपने कॉन्टैक्ट कुछ भी डिटेल्स, मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, बिकॉज यू आर आई थिंक यू आर अ बेस्ट काउंसलर। Please, anyway, that's very good. You can note my mobile phone number 94 Yes sir. 172 Yes sir. 44 Yeah. 393. Okay sir. 94172 44 393. This is my mobile number. My name is Arun Kapoor. Yes sir. My email ID is Arun Kapoor, ARUNKAPOOR, one word, छोटे लेटर्स में है, अरुण कपूर Yes sir. अंडरस्कोर कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड के स्पेलिंग है CONCO, Yes sir. Yes sir. RD, R for red, D for dog, Concord, CONCORD @yahoo.com. Okay sir. You're welcome. Anybody else, please? No sir, from not. Okay, thank you very much for being with us. किसी और सेंटर से पूछने की चीजें बातचीत करनी तो कर लीजिए। Any other queries from any other nodal center? Okay, then thank you very much. Thank you, for sir. being with us. First of all, I thank on behalf of NIT sir. Thank you. To share his valuable experiences and share his time with the participants of this training program. And I thank all the participants at all the nodal centers that they also interacted. And in the two-way interaction, it is clear whether you have gained something or not. So I'm very thankful to you for the positive participation. And we break here for the lunch. And since it is 1:20 in our studio watch, so we will not. We will be, since last session expert is also invited from outside. So we should not wait him for long. So 2:10, not 2:10. We are taking 10 minutes. We are extending 10 minutes lunch break. So 2:10 we will be connecting back and have your lunch and be back. And thank you very much. All the best, sir. Thank you very much. Thank you, sir.
Kapila sir, you must have. ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਜੀ. Okay. Okay. Very good afternoon, all. Today we have with us Professor Suresh Chedda, who is a chairperson and professor in the for University Business School, Punjab University, Chandigarh, and he is from a renowned business school in the northern India. Some of my students where I talked earlier, they are now the student of pursuing MBA from SIRS College. And I am grateful that on our request he has agreed to engage a session in the program on strategic planning and management of technical institutions that is being conducted from 1st to 5th August 2016. So, that's it. I will just share with the user lists of the Noodle Center also. Today sir is with us, and I hope all the Noodle Centers are connected to us, and within a minute we will be starting from here. Sir, welcome. Thank you. Thank you, sir. It's over to you. I can start now. Good afternoon, everybody. ऐसे बोलो कि कहीं और जाके. Good afternoon, everybody. I think today I'm really grateful to Amardeep and Dr. Dhamija for inviting me here, and I'm really concerned about education. So we'll just try to list down that what role education plays, and particularly technical education. I Punjab Hindi ji bol sakta, and today I think knowledge is power. I say it's not the knowledge, it's the applied knowledge. The main challenge with us is that whether we are trying to give the knowledge which is really applicable or not. That's a big challenge. So I'll be just going through certain transparencies and just tell you that today what is important is whatever we are teaching, our youngsters should what? Our youngsters should have the applicable. So I just try to Chanakya Niti. Never live in a society which does not have the 5-featured employment opportunity. The strategic education should be that whether the student is prepared for the employment or not. That's very important. And the second thing is fear of law, the values. That is very, very important. The values are very, very important. Sense of shame of doing wrong thing, intelligent. जो हम knowledge दे रहे हैं क्या वो उसको applicable कर रहा है कि नहीं. और एक और जो चीज़ है दसवंत जो हम कहते हैं spirit of giving, whether we are giving back to the society or not. So I think today this is the need of the hour. Education is very, very important. आज के टाइम में जो भी 20th सक्सेस हुआ है that is all because of innovation. जो आप टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, टेक्निकल कॉलेजेस हैं, इन्होंने सारा किया है. आप देखिए कार्स टू कंप्यूटर एंड इंटरनेट, सारी चीजें जो आजकल क्या है टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड है. ग्लोबलाइजेशन है, प्रोडक्शन नेटवर्क्स है, एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स है. आज हम क्वालिटी की बात करते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं, लीन सिग्मा की बात करते हैं, सिक्स सिग्मा की बात करते हैं. ये सारे क्या हैं? These are all becoming what? These are all becoming very, very important. आज जो प्रॉब्लम्स है, हमें जो एजुकेशन में क्या करना चाहिए, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं अभी थोड़ा सा रिसर्च के बारे में बताऊंगा. अभी हमें रिसर्च उन एरियाज में करनी चाहिए जहाँ पे हम लोकेटेड है. हम नॉर्मली रिसर्च क्या करते हैं, जापान की करते हैं, यूएसए की करते हैं, उससे हमें नहीं फायदा होगा. अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं, वी शुड डू अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट्स और द रीजन्स वेयर वी आर बेस्ड. अगर हम नजदीक के सारे कहेंगे तो हमारा जो मेन एम क्या है, रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड इम्प्रूव्ड हेल्थ बीइंग फॉर ऑल द पीपल. सो आज के टाइम में जो इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, उनका रोल होना चाहिए भी जो चैलेंजेस हमारी इकोनॉमी को आ रही हैं उनको ओवरकम करना चाहिए. जो मेन चैलेंजेस आ रही है पॉवर्टी की, हमें जो पॉवर्टी है मेन प्रॉब्लम है, तो हमें जो रिसर्च करनी चाहिए, जो उसमें देखना चाहिए भी जो हम बच्चे कर रहे हैं हमारे पास,
जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो हम देखते भी क्या उस एरिया में वो क्या कर, उनको जॉब मिलती है कि नहीं मिलती, क्या वो हम उनके मुताबिक हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो आज के टाइम में जो पॉवर्टी इज द मेन थिंग, हमारे बच्चे इंजीनियरिंग कर लेते हैं और उसके बाद उनको क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती और उस एरिया में उनको जॉब नहीं मिलती। तो पहली चैलेंज है भी हमें पॉवर्टी के लिए कुछ करना चाहिए। दूसरी चीज है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, आजकल हमारे फ्यूचर चैलेंजेस है, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज हमारे प्रॉब्लम है, टेररिज्म एंड वॉर। सो हमें आज के टाइम में जो एजुकेशन है दैट शुड रिवॉल्व अराउंड द नियर बाय एरियाज, ताकि हम उनकी समस्याओं को पढ़कर और उनकी समस्याओं को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। मैंने कई बार देखा जो हम यूनिवर्सिटी में सिलेबस बना देते हैं और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन सिलेबस बना देती है, और जो आगे लोगों को होता है उस एरिया के साथ कंसर्न होने के बिना ही हम क्या करते हैं, सिलेबस पढ़ाते हैं बच्चों को, उस एरिया में उसको रेलेवेंस नहीं होती। तो इस करके ये जो चीजें हैं दीज आर बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में मैं ये कहता हूँ भी जो भी हमें एजुकेशन की जो स्ट्रेटजीज होनी चाहिए वो गिव्स के ऊपर होनी चाहिए भी। जो भी स्ट्रेटजीज है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमें अपनी जो रिसोर्सेज हैं वो कम से कम यूज करके मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट करना चाहिए। हमारे जो हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, हमारे रिसोर्सेज मिनिमम यूज होने चाहिए, और हम चाहते हैं भी, हमें चाहिए कि भी हम मैक्सिमम इनपुट दें अपने बच्चों को। और दूसरी चीज हमारी कॉस्ट कटिंग होनी चाहिए। आजकल हम हर कंपनी जो सिखाती है, कंपनीज हमें 6 सिग्मा की बात सिखाती, क्वालिटी की बात सिखाती है, ये सारी चीजें क्या है, दैट शुड बी टेकन इन अकाउंट। आज हम खर्चे कर रहे हैं, पर अगर हमारे बच्चे जो इंजीनियरिंग प्रॉपर इंजीनियरिंग बनने, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। और तीसरी चीज जॉब क्रिएशन, क्या हम अपने बच्चों को जो एजुकेशन दे रहे हैं क्या वो जॉब ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। मैं कई बार देखता हूँ जो हमारे बच्चे हैं वो दे आर नॉट जॉब ओरिएंटेड। हमारी एजुकेशन सिस्टम में हम सिर्फ उनको पढ़ाते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, पर हम उनको सिखाते नहीं भी कैसे अप्लाई किया जाए। क्योंकि जो भी इंडस्ट्री है, लोग चाहते हैं भी उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा, यू कैन नॉट ग्रो इन द सोसाइटी। मेरे मुताबिक प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन होनी चाहिए। आज के टाइम में हमें बच्चों को प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बनाना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए भी कैसे, जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, हाउ इट इज हेल्पफुल इन द इंडस्ट्री। आज हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को सिर्फ पढ़ा रहे हैं, मगअप कर रहे हैं, वो सिर्फ वॉमिट आउट करके आते हैं, उनको ये नहीं पता था भी इंडस्ट्री में उसका क्या होगा, कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। सो आज के टाइम में जॉब क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे मुताबिक हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए। जब तक हम जॉब ओरिएंटेड नहीं होंगे, और इसके लिए मैं ये चाहता हूँ भी हमारे टीचर्स भी इंडस्ट्री में जाएं। ये नहीं भी हम सिर्फ अपने मुताबिक काम कर रहे हैं, हमें इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करना चाहिए, ताकि हमें पता चलना चाहिए भी इंडस्ट्री क्या चाहती है, उसके मुताबिक हमें अपना सिलेबस बनाना चाहिए, उसके मुताबिक हमें क्या करना चाहिए, करिकुलम डेवलप करना चाहिए, और उसके मुताबिक चीजें करनी। उससे हमारा क्या होगा, जब तक हम इंडस्ट्री को अपने साथ नहीं रखते और उनको इन्वॉल्व नहीं करते हम करिकुलम में और उसको एजुकेशन में, तो हमारी जो है जॉब क्रिएशन कभी नहीं हो सकती। और अगली चीज है कस्टमर डिलाइट। हमारे जो कस्टमर डिलाइट है, जो भी हमारे पास बच्चा आता है, हमें उसको डिलाइट करना चाहिए, हमें मैक्सिमम उसको नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, वैल्यूज चारों देनी चाहिए। आज के टाइम में नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डायरेक्टर प्लेसमेंट सेल भी हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी का, तो आजकल कंपनी ये चाहती है भी बच्चा जो है सच्चा बोले, उसको कोई वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए वो क्या करते हैं, देखिए लॉट ऑफ वेटेज टू दैट। सो आज के टाइम में स्किल्स हमें इंप्रूव करनी चाहिए। आजकल जो हमारी सरकार है उसने काफी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है, तो मेरे मुताबिक स्किल डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को स्किल्स और एटीट्यूड इज, तभी हम अपने कस्टमर को क्या कर सकते हैं, डिलाइट कर सकते हैं। दूसरी चीज जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग है, चैलेंज नहीं है बच्चों को। हमारे बच्चों में कोई चैलेंज नहीं है। बच्चे क्या है, दे आर नॉट बीइंग चैलेंज्ड, तभी हमारे इनोवेशन नहीं होती। आज के टाइम में बच्चों को चैलेंज करिए, आज के टाइम में उनको कहीं भी आइडियाज लेकर आए। मेरे मुताबिक कोई भी कंपनी आजकल इनोवेटिव पीपल लेती है, क्रिएटिव पीपल, और जो बच्चा इनोवेटिव नहीं है उसको कभी जॉब नहीं मिलती। हमारे एजुकेशन में हमें क्या करना चाहिए,
बच्चों को इनोवेशन करने के लिए, मैं कई बार देखता हूँ भी हमारे बच्चे क्यों इनोवेटिव नहीं है, क्योंकि हम बच्चों को सिखाते ही नहीं है भी फेल होना भी सीखना चाहिए। हम बच्चों को कहते हैं भी सिर्फ पास, हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा है भी सिर्फ पास होना सीखे, और फेल होने के लिए कभी नहीं हम सिखाते। हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए भी नई नई चीजें चेंज करके लेकर आओ। पर हमारे इंडिया में इनोवेशन की बहुत कमी है, और मेरे मुताबिक बच्चों को चैलेंज करो, उनको कहो ये प्रॉब्लम है, इसका हल बताओ। प्रॉब्लम एनालिटिकल स्किल्स बहुत जरूरी है। आज के टाइम में बच्चे सिर्फ चीजें पढ़कर आ जाते हैं, गूगल से लेकर आ जाते हैं, और वो क्या करते हैं, दे आर नॉट इनोवेटिव। एज अ टीचर आई वुड लाइक दैट यू शुड गिव द चैलेंजेस। उनको प्रॉब्लम बताइए, उस एरियाज में प्रॉब्लम बताकर उनको को भी कैसे हम इसका हल निकाल सकते हैं। आइडियाज लीजिए, आइडियाज लेने के बाद उनसे एक्शन करिए, इम्प्लीमेंटेशन करिए, और उसके मुताबिक इनोवेशन होनी चाहिए। मेरे मुताबिक आज के टाइम जो कंपनीज, जो ऑर्गेनाइजेशन इनोवेटिव नहीं है वो कभी सक्सेसफुल नहीं। आज हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को ये सिखाते नहीं है भी, आपको चैलेंज नहीं करते, और उससे क्या हो रहा है, इनोवेशन है। आप कंपनी देखिए, फेसबुक देखिए, एप्पल देखिए, कोई भी कंपनी देखिए, LG, सैमसंग, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सारी कंपनीज आज जो सर्वाइव कर रही हैं, दे आर सर्वाइविंग ओनली बिकॉज ऑफ द इनोवेशन। सो दूसरी चीज, एजुकेशन सिस्टम में इनोवेशन या चैलेंज होना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज, वैल्यू सिस्टम। आज के टाइम में हमारा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है अभी, वैल्यूज हमारी नीचे जा रही है। आज हम पंजाब में हैं, पंजाब में संस्कृत हमारी इतनी पुरानी भाषा है, पर हम संस्कृत पढ़ाते ही नहीं है बच्चों को। हमारा जो कल्चर हम सिखाते ही नहीं है। आज बाहरले देश में आप जाते हो तो उनको क्या करते हैं, वो अपनी मदर टंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हमारी वैल्यूज को हमें क्या करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन सिस्टम विदाउट वैल्यूज मीन्स नथिंग। आज वेदर यू आर गुड इंजीनियर्स, आप कुछ डॉक्टर बन जाओ, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वैल्यू सिस्टम। और वैल्यू सिस्टम में हमें बिल्ड नेशनल क्रेडिबिलिटी। बच्चों को सिखाना चाहिए भी, आज हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं तो हमें बच्चों को बताना चाहिए भी, आज के टाइम में क्या है, अगर हमारा भारत स्वच्छ होगा, हमें सोच बदलनी पड़ेगी। हमें बच्चों को बताना पड़ेगा भी, आज हम डेवलपिंग नेशन नहीं कहते, हम अपने आप को क्या कहें, वी शुड से दैट वी आर ए डेवलप्ड नेशन। थोड़ी थोड़ी चीजें जो हम नेशन के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं वो हमारे बेनिफिट के लिए जाती हैं। थोड़ी थोड़ी स्वच्छ, अगर हम अपने कमरे को साफ रखेंगे, हम अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को साफ रखेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी जो है क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और सेकंड चीज है पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो भी बच्चा है उसको सारी पब्लिक के बारे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कम्युनिकेशन करे और नॉलेज के साथ उसको कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज है मोटिवेटेड। आज का जो बच्चा मोटिवेटेड नहीं है, एज अ टीचर मैं हमेशा कहता हूँ भी, जो टीचर का रोल है वो मोटिवेशन करने का। यू हैव टू मोटिवेट योर स्टूडेंट्स। आज हमारी सबसे बड़ी मिसिंग क्या है, हम अपने बच्चों को मोटिवेट ही नहीं करते। जब तक हम अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं करेंगे, कभी भी हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आज के टाइम में मोटिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे इन दिस केस। एंड देन द अदर थिंग इज इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी चाहिए। आज के टाइम में जो भी हम चीज कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर होना चाहिए। जो भी हम, जो स्वच्छ भारत हम कर रहे हैं, कोई भी चीज हम कर रहे हैं, ये सारी क्या है, हमारे बच्चों की या हमारे जो जनरेशन आगे आएंगी उनकी सारी क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इंप्रूव। इंटीग्रिटी मीन्स झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हमने कोई गलत किया, वी शुड एडमिट इट। आज के टाइम में इंटीग्रिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में मैं कई बार देखता हूँ, हम बच्चों को असाइनमेंट देते हैं, बच्चे क्या करते हैं, सारे गूगल से डाउनलोड करके ले आते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। बच्चों को ये सिखाना चाहिए भी, कोई भी चीज आप करते हैं उसके साथ क्या करना चाहिए, यू शुड ट्राई टू वॉट, आप उसमें बिल्कुल अपना प्रेजेंट करिए। अगर हम कहीं से नोट डाउन भी कर रहे हैं तो नीचे उसके लिखना चाहिए भी कहाँ से हमने रेफरेंस लिया। तो इंटीग्रिटी बच्चों को सिखानी बहुत जरूरी है एजुकेशन सिस्टम में। और पैशन फॉर विनिंग, बच्चों में एक जज्बा लेकर आना हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का रोल है, टू विन इन दैट केस। कई बार मैं देखता हूँ कि बच्चे जो ना ड्रीम्स नहीं करते, बहुत
ड्रीम कम करते हैं, उनको ये लगता ही नहीं भी हमें एजुकेशन के साथ हमारा, दे आर लूजिंग कॉन्फिडेंस इन द एजुकेशन। उनको बताना चाहिए भी ड्रीम करो, और हमें अपने सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि हमारा जो हो सकता है, क्या हो सकता है, जो उनकी एक एटीट्यूड चेंज हो, उनमें ये लगे भी हमने कुछ जिंदगी में कुछ बनकर आना है, और वो पैशन फॉर विनिंग होना चाहिए। क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते, समथिंग in between, you can ask some questions. अगर आपको कोई क्वेश्चन बीच में मैं रोक रहा हूं, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चंस. Any question if you want to ask? Any questions if you want to ask right now? I am talking about education strategies. Any questions? मिल नहीं रहा, कोई हो नहीं रहा. एक सेंटर का को SJT University, they want any questions? Any questions? नहीं नहीं, टाइप हो रहा, कोई क्वेश्चन नहीं. ग्लोबल इंस्टीट्यूट वालों को कोई अगर क्वेश्चन की अगर कोई है तो? No sir, right now no questions. ओके. अगला जो हमारा एजुकेशन सिस्टम में जो होना चाहिए, जो स्ट्रेटजीज होनी चाहिए एक्सपेंशन की, नॉलेज शेयरिंग. आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नॉलेज को शेयर करिए. जब तक हम अपने नॉलेज को शेयर नहीं करेंगे, हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते. आज के टाइम में मेरे मुताबिक जब भी मैं टीचर्स सारे दे आर वेरी कॉम्पिटेंट, और आप अपनी नॉलेज कैसे शेयर कर सकते हैं? अगर हम रिसर्च पेपर जो है इकट्ठे मिलकर लिखें. मैं कई बार देखता हूं भी जो टीचर है, एजुकेशन सिस्टम में टीचर का रोल सबसे बड़ा है. उसके लिए अगर टीचर पढ़ रहा है या टीचर अपना कोई इकट्ठे मिलकर पेपर लिखते हैं, तो उससे क्या होता है? टीचर की ग्रोथ होती है. आज के टाइम में मेरे मुताबिक एजुकेशन में हमें नॉलेज शेयरिंग करना बहुत जरूरी है. यू शुड शेयर द नॉलेज, शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, और नॉट ओनली शेयरिंग ऑफ नॉलेज बट टेक्नोलॉजी भी शेयर करनी चाहिए. और मेरे मुताबिक एजुकेशन शुड रीच एट द फार रूरल एरियाज में. आज के टाइम में अगली जो स्ट्रेटजीज होनी चाहिए एक्सपेंशन. हमें शेयरिंग ऑफ नॉलेज इज वेरी वेरी. अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरा मेन मकसद यही है भी हम एक छोटा सा वो कर रहे हैं, अभी शेयर कर रहे हैं नॉलेज. अगर मैं आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ और जब आपके साथ कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा? हमारे सारा क्या होगा? वी विल हैव व्हाट? वी विल हैव डबल द नॉलेज. एक हम छोटी सी इनोवेटिव की एक्सरसाइज करें, हम टीचर्स ऑल ऑफ देम आर रेडी, करें, कर सकते हैं. एक पेन और पेपर निकालिए सारे जने. हेलो, हेलो करूं? मैं ना एक छोटा सा एक्सरसाइज देता हूं, देखते हैं आप में से कौन सोचता है, कौन इनोवेटिव है. आप सब अपनी बॉडी पार्ट से अवेयर हैं? पेन पेंसिल रखिए. आप मेरे को नेम 10 ह्यूमन बॉडी पार्ट्स विथ 3 अल्फाबेट्स लिखिए. आप 5 मिनट देता हूं. नेम 10 ह्यूमन बॉडी पार्ट्स विथ 3 अल्फाबेट्स. आर यू रेडी? चला गया. आप करिए, आप उसको. मैं 5 मिनट में, आप इसको देखिए कौन कौन से 10 ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं. आप ऐसे देखते हैं भी कौन इस क्वेश्चन को आंसर कर सकता है. हेलो, हेलो. हाँ शानी,
मैं 3.5 4 कर दिया। कोई एक इंस्टीट्यूट का खोलो। हाँ जी, आपको 10 ह्यूमन बॉडी पार्ट्स विद 3 अल्फाबेट्स, 3 अल्फाबेट्स होने चाहिए। So we are just trying, sir. We are just trying. ओके, ट्राई। ये LM। हाँ जी मैडम। इसमें तो थोड़े से 5-10 बैठे हो तभी बढ़िया लगता है, बट दे आर रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्ड करेंगे, करो करो जरा। आईसीटी ये ग्लोबली कर रहा है, बाकी नहीं कर रहे। हाँ जी, यू हैव डन इट। ओके, यू हैव डन 10 ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। So we have only 8 names, sir. Okay, tell the 8. Name them. Okay, sir. Eyes, ear, leg, rib, toe, arm, lip, and hip. Hip. Jaw. You have missed. Jaw also, sir. You have missed one more, gum. Yes, sir. Gum and jaw. Gum and jaw. So that's 10 now. Okay, so what I'm just trying to tell you, you should challenge yourselves every day. One more exercise, we'll do it. Okay. Okay. Are you, another institute? देखो दूसरे के साथ आपने किया जी 10 ह्यूमन बॉडी पार्ट्स आपने किया 10 ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। SGT University, can you name 10 human body parts? Can you name 10 human body parts? नहीं आ रही। तीसरा पे करो। Balaji, have you done that 10 human body parts? हेलो, ऑडिबल ही नहीं है। उनको सुन भी रहा कि नहीं? SJT यूनिवर्सिटी। हेलो सर, आपका माइक नहीं वर्क कर रहा है, इसको माइक ऑन कर लीजिए सर। नहीं सर, ये वर्क नहीं कर रहा, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए पेज अपना। यस, बालाजी यूनिवर्सिटी, बालाजी कॉलेज। हेलो हेलो, yes sir. Sir, have you done the exercise given by sir? Yes sir, can you hear me?
from SGT University. Sir, can I answer the question? Hello. हाँ जी. Sir, can I speak? Yeah, you can. Okay, sir. Sir, please listen to answer. First one is eye. Second is leg. Arm. Toe. Ear. Lip. Jaw. गम. इनको दूसरे को सुनाई देते हैं दूसरे को. Lip. Hip. So big applause. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Okay, big applause. ये लगाना अब दूसरा ये लगाना वो presentation. Okay, now I'll just talk about skill upgradation. I think the role of technical institutions nowadays is skill upgradation. That's very, very important. Today, I think the people skills have to be improved. I just tell you that in the organizations where they are going to work, they will go into for minimizing inventories. You have to teach them that how to minimize the inventories. That is very, very important. Today, in any organization, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है आजकल कॉस्ट कटिंग की हम बात करते हैं. फिर आपने वो स्किल उसको देने हैं. जैसे हम जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, हाउ टू इंप्रूव जस्ट इन टाइम इन्वेंट्रीज. हम आजकल मैं एक छोटा सा लेकर आ रहा हूं भी इंप्रूव प्रोडक्टिविटी. कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम लीडर्स बना सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज कैसे इनकलकेट कर सकते हैं. मल्टी स्किल्ड वर्कर चाहिए आजकल. आज के टाइम में हमें स्किल अपग्रेडेशन की बहुत जरूरत है. और मेरे मुताबिक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं आजकल के टाइम में वो बहुत जरूरी है. क्योंकि आज के टाइम में नॉलेज ही काम नहीं आती. नॉलेज के साथ अगर स्किल्स आ जाती हैं तो हमारा क्या होता है, हमारी जो एम्प्लॉयबिलिटी है बढ़ जाती है. तो मेरे मुताबिक एजुकेशन में आजकल स्किल्स आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. छोटे छोटे स्किल्स इंप्रूव करिए. भी इन्वेंटरीज को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, जस्ट इन टाइम को कैसे मेंटेन कर. मैं आपको बताता हूँ भी हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करते हैं. जो डिब्बा वाला है बॉम्बे में, हम बच्चों को 6 सिग्मा सिखाते हैं, पर जो डिब्बा वाला है बॉम्बे में वो 10 सिग्मा है. वो 4 लाख टिफिन डेली बांटते हैं बॉम्बे में, और वो भी लोकल ट्रेन्स में. और आपको मालूम है उनका रिजेक्शन रेट नील है. तो आज के टाइम में ये जो स्किल्स है कैसे इंप्रूव करनी है बच्चों को, ये हमें सिखाना पड़ेगा और एजुकेशन सिस्टम में हमें इनकलकेट करना पड़ेगा. तो आई थिंक दिस इज व्हाट वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट. सो मेरे मुताबिक आज के टाइम में हम सबको कनेक्ट होकर काम करना पड़ेगा. मेरे मुताबिक इंडस्ट्री के साथ हमें काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के साथ हमें काम करना पड़ेगा, एजुकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना पड़ेगा. जब तक हम सारे मिलकर काम नहीं करते हमारी जो प्रॉब्लम्स है एजुकेशन की कभी पूरी नहीं हो सकती. आज के टाइम में कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है. मैं आपको बताता हूं इंडस्ट्री कनेक्ट, हम अपने पंजाब यूनिवर्सिटी में हम इंडस्ट्री कनेक्ट, मेरे मुताबिक जब तक हम इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट नहीं करते, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते, हम कभी भी सक्सेसफुल बच्चे नहीं प्रोड्यूस कर सकते जो एंटरप्रेन्योर्स हैं. मैं आपको बताता हूं जो इंडस्ट्री वाले हमें कहते हैं भी जो रिसर्चर्स हैं, जो हम एजुकेशनिस्ट है, वो सारे थ्योरेटिकल है, उनको प्रैक्टिकल का कोई नॉलेज नहीं है. दूसरी चीज वो कहते हैं भी उनके पास रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है. तीसरी चीज कहते हैं भी वो हमारे साथ रिलेशन बनाने की कोशिश ही नहीं करते. जो टीचर है वो सोचता है भी जो मैंने पढ़ा दिया वही ठीक है, बाकी मैंने इंडस्ट्री या किसी को साथ मैंने मिलकर काम नहीं करना. आज की जब तक जरूरत है भी हम जब तक हम कोलैबोरेट नहीं करते इंडस्ट्री के साथ, हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते. जो भी हम बच्चे इंजीनियर्स बना रहे हैं दे विल नेवर बी एम्प्लॉयड. मैं पीछे पूना में था, पूना में वो क्या करते हैं, लोगों को इंडस्ट्री के लोग पीएचडी गाइड कर रहे हैं. जो रिसर्चर है वो क्या करता है, वो इंडस्ट्री में जाकर रिसर्च करता है. आज के टाइम में जब तक हम इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट नहीं होंगे हमारी स्ट्रेटेजिक एजुकेशन सिस्टम कभी इंप्रूव नहीं कर सकती. और जो रिसर्चर क्या कहते हैं भी शॉर्ट टाइम लाइन्स, वो ने डेडलाइन देते जो हमारे साथ पूरे नहीं कर सकते हम, और जस्टिफाइंग वैल्यू फॉर रिसर्च, वो हमें पूरे पैसे नहीं देते. आज के टाइम में कोलैबोरेशन मैंने
चीजों के कोलैबोरेशन की बात की है, रिसर्चर के साथ, इंडस्ट्री के साथ, गवर्नमेंट के साथ और इंडस्ट्री के साथ। पहले क्या करना चाहिए, आप इंडस्ट्री के साथ जाकर उनको पूछो भी क्या प्रॉब्लम है आपकी। हम यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में हम क्या करते हैं, कोई भी इंडस्ट्री है, जैसे मैकेनिकल की यहाँ इंडस्ट्री एसएमएल इंडस्ट्री है, वहां पे बच्चों को लेकर जाते हैं और बच्चों से पूछते हैं भी, उनसे जाकर पूछते हैं भी आपकी कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, और वो हमें प्रॉब्लम देते हैं। और वो हम प्रॉब्लम क्या करते हैं, अपने यूनिवर्सिटी में आकर 10-12 बच्चे मिलकर उसको क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आज के टाइम में मेरे मुताबिक आप जब तक इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी वी कैन नॉट हैव गुड आउटपुट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो मेरे मुताबिक आप अपने बच्चों को इंडस्ट्री लेकर जाइए, इंडस्ट्री में लेकर जाकर उनको पूछिए भी क्या प्रॉब्लम्स है, और फिर वो प्रॉब्लम्स आप क्या कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। सो मेरे मुताबिक हम कैसे कर सकते हैं, हाउ यू कुड बी यूजफुल टू द, so that is the first thing which you have to take into account, that is you have to what, you have to go to the second चीज हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री के साथ। इंडस्ट्री के साथ हमें क्या करना चाहिए, इंडस्ट्री हमारे टीचर्स को छुट्टियों में इंडस्ट्रीज के पास जाना चाहिए फॉर डूइंग सम ट्रेनिंग। हमें ये नहीं पता भी इंडस्ट्री वाले क्या चाहते हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं वो सारा क्या है, वो सारा उसके मुताबिक है ही नहीं है। हमें अपने लोगों को इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहिए, 15 डेज के लिए, 20 डेज के लिए, ताकि वहां जाकर वो क्या कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करें और वो क्या कर सकते हैं, दैट वी कैन डू इट इन दैट केस। सो मेरे मुताबिक रिसर्चर और इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में हम क्या करते हैं, एकेडमिक इंडस्ट्री, मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, हमारे मुताबिक इंडस्ट्री का मतलब क्या है, एक लेक्चर करवा दिया, हम कहते हैं एकेडमिक इंटरफेस होगी, नहीं। हमें फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स करनी चाहिए, हमें महीने में एक बार इंडस्ट्री के लोग बुलाकर उनको पूछना चाहिए भी आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, और वो प्रॉब्लम्स हम अपने रिसर्चर को बताएं, और वो रिसर्चर को बताकर हम क्या कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आज के टाइम में industry people should go to the academia and academia people should go to the industry. That is how we are missing. और मेरे मुताबिक जब तक हम ये नहीं करेंगे, हमारी कोई भी एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव नहीं कर सकता। मैं अमेरिका में था, अमेरिका में कोई भी प्रॉब्लम अगर इंडस्ट्री को आती है, वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं और यूनिवर्सिटी में जाकर उनको बताते भी हमारी ये प्रॉब्लम है, और यूनिवर्सिटी वाले सारे डिपार्टमेंट्स को बुलाकर उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके क्या करते हैं, दे डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग, और ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसका हल निकालते हैं। सो आज के टाइम में ये जो स्ट्रेटजीज हैं ये बहुत काम आएंगी, और मेरे मुताबिक दिस इज द की ऑफ द थिंग। एंड थर्ड थिंग इज गवर्नमेंट को भी इसमें हेल्प करनी चाहिए। आज के टाइम में मेरे मुताबिक जो भी गवर्नमेंट है, अब जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, हम SEZ बना रहे हैं या कोई भी चीज बना रहे हैं, तो हमें एकेडमिया को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि एकेडमिया को भी पता चलना चाहिए कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट हो रहा है। क्योंकि आज के टाइम में गवर्नमेंट को इंडस्ट्री और अपने एकेडमिया के साथ मिलकर जो भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उनको उस पर इन्वॉल्व करना चाहिए। और आज के टाइम में क्योंकि जो फंडिंग है, फंडिंग आएंगी गवर्नमेंट के साथ, और वो फंडिंग के साथ क्या होगा, इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी और एकेडमिया भी ग्रो करेगा। और हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करते हैं, जैसे डेरा बसी हुआ, या जहाँ पे भी हमें कोई सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनाना है, उस इंडस्ट्री का क्लस्टर बनाना है, तो उसमें एकेडमिया को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, ताकि एकेडमिया भी अपने इनपुट दे सकते हैं और इंडस्ट्री भी अपने इनपुट दे सकते हैं। उससे क्या हो सकता है, जो गवर्नमेंट का पैसा है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकता है। और चौथी चीज जो मैं कहता हूँ वो है हमारा एसोसिएशन के साथ, जैसे CII हो गया, PADCCI हो गया, SHM हो गया, हमारे को उनके साथ भी एसोसिएशन करनी चाहिए। जब तक हम उनके साथ एसोसिएशन नहीं करेंगे, CII के साथ एसोसिएशन नहीं करेंगे, SHM के साथ नहीं एसोसिएशन करेंगे, हमारी एजुकेशन सिस्टम कभी इंप्रूव नहीं कर सकता। क्योंकि हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इंडस्ट्री के मुताबिक है कि नहीं है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली मैं
टीचर हूँ, मैं डायरेक्टर प्लेसमेंट भी हूँ, तो मेरा ये है भी मेरा प्रोडक्ट सेल होना चाहिए। और जब सेल तभी होगा अगर हम जो चीज इंडस्ट्री चाहती है हम उसके मुताबिक प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं करते। दैट इज व्हाट वी हैव टू टेक अंडर। सो आज के टाइम में मैं ये जो 4 चीजें लेकर आया हूँ, भी रिसर्चर इंडस्ट्री के साथ काम करे, इंडस्ट्री एकेडमिया के साथ काम करे, गवर्नमेंट इंडस्ट्री और रिसर्चर के साथ काम करे, और जो एसोचैम है, जो एसोसिएशन है, वो भी किसके साथ काम करे, सारे मिलकर काम करेंगे तभी हमारा क्या होगा, हमारा एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव होगा। मेरे मुताबिक हम सारे रिसर्चर हैं, टीचर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, आपको ये सोचना चाहिए भी हम कैसे इंडस्ट्री को अपने साथ एसोसिएट कर सकते हैं। पहली चीज, उनको एसोसिएट करिए। जब तक हम उसको एसोसिएट नहीं करेंगे तब तक हमारा कभी भी एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव नहीं हो सकता। दूसरी चीज, हमें बताना चाहिए भी कैसे हमारी रिसर्च आउटकम्स, कैसे उनको फायदे होगा, क्योंकि अगर इंडस्ट्री वाले और एकेडमिया वाले मिलेंगे तो जो भी रिसर्च हम करेंगे वो इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा। और फिर हमें ये भी बताना चाहिए भी हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा बेनिफिट हो सके। और फिर हमें ग्रेशियसली काम करना चाहिए, ईगो लेकर काम नहीं करना चाहिए। हमारे टीचर को ये लगता है भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही ठीक है, हमें लगता है भी इंडस्ट्री को साथ हमें नहीं करना चाहिए। आज के टाइम में नीड ऑफ द आरएस, हमें इंडस्ट्री को पार्टनर बनाना ही पड़ेगा। आज हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोल रहे हैं पर हमारा जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस सारे बंद हो रहे हैं, उसका रीजन क्या है, हम इंडस्ट्री कनेक्ट नहीं है। हमारे को ये नहीं पता होता भी हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या उसके मुताबिक है कि नहीं है। और जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक मेरे मुताबिक जितना मर्जी हम अच्छा पढ़ा लें, जितना मर्जी वो कर ले, हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब एक और एक्सरसाइज करते हैं हम। ऑल ऑफ यू आर रेडी? ओके, ड्रॉ ए रेक्टेंगल विथ 3 लाइन्स। Draw a rectangle with 3 lines. ये ना वो नहीं होता, मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि हमें टीचर को ना सामने आप यहाँ टेक्नीशियन से यू आर वर्किंग परमानेंट है, परमानेंट। Have you drawn a rectangle with 3 lines? Draw a rectangle with 3 lines. हाँ जी, आईसीटी ग्लोबल कैसे ड्रॉ किया है? ये तो जुगाड़ हो गया अभी, इट्स अ जुगाड़। मैं कहता हूं ड्रॉ ए रेक्टेंगल विथ 3 लाइन्स। दूसरे लेकर जाओ। हाँ जी, draw a rectangle with 3 lines. Hello. Hello. हाँ जी। Sir, we have drawn this. कैसे? The 4th line can be considered as the edge of the paper. If you This again a जुगाड़. it has to be done with the जुगाड़. No, not practical. Next. I just tell you. I just told you to draw a rectangle with 3 lines. It should have been, you should have drawn a rectangle and in between you should have drawn 3 lines. Understood? हमें वहां जा सकता हूं? Draw a rectangle with 3 lines. एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो और बीच में क्या करो? You should have drawn a rectangle
and in between drawn what? 3 lines. Are you clear? देखो उनको पूछा are you clear or not? Are you clear or not? I just asked you draw a rectangle with 3 lines. I never told you to manipulate the things. Rectangle should have been drawn, and in between you should have drawn what? 3 lines. So I just have a vision. India to be number 1 as a country, and when India is to be number 1 country, balanced wealth, everybody should be happy. Ab India mein, why we are talking about education? Because we are having the young population. स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी? बेटर एजुकेशन. इसका मतलब जो रोल है एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है. आज के टाइम में जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव नहीं होगा, हम जितना मर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा खर्च कर लें, जितना मर्जी हम एफडीआई ले आए, जब तक हमारा एजुकेशन ठीक नहीं होगा कभी इंप्रूवमेंट नहीं होगी. एजुकेशन सिस्टम हैव टू बी इंप्रूव्ड और एम्प्लॉयबल स्किल्स होने चाहिए. जब तक स्किल्ड एम्प्लॉयबल नहीं है तो हम कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकते. और मेजरमेंट क्या है? जीडीपी. आज के टाइम में वैल्यूज क्या है? इंटीग्रिटी, एथिक्स, फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्टिन्यूस लर्निंग. मेरे मुताबिक आप टीचर हैं, लर्निंग शुड नेवर एंड. आज के टाइम में जब तक हम अपने आप को लर्नर्स ही बनाते, एजुकेशन में जो पिलर्स कौन है? टीचर्स. जो लीडर्स कौन है? टीचर्स है. तो हमें टीचर्स को क्या बनना है? वी हैव टू बी द रोल मॉडल्स. वी हैव टू कॉन्टिन्यूसली लर्न. मैं कई बार जब मैं टीचर बना तो मैं क्या था, भी मेरे को लग रहा था भी बोलना भी बहुत आसान है, पढ़ना भी बहुत आसान है. जब मैंने लिखना शुरू किया मेरे को कुछ नहीं आता था. आज के टाइम में सारे टीचर्स हैं. मैं ये चाहता हूं भी आप सारे टीचर्स रिसर्च करना शुरू करिए, लिखना शुरू करिए. क्योंकि जब तक आप लिखना नहीं शुरू करेंगे तब तक आप कभी भी अच्छे टीचर नहीं बन सकते. और मैं ये चाहूंगा भी रिसर्च करनी है, इंडस्ट्री को एसोसिएट करिए. आज के टाइम में जैसे हम टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जब तक वी आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट विद द इंडस्ट्री, वी आर नॉट डूइंग रिसर्च फॉर द इंडस्ट्री, फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडस्ट्री, वी कैन नॉट ग्रो. और मेरे मुताबिक टीचर वही है जो कॉन्टिन्यूसली लर्न करता है और कॉन्टिन्यूसली अपना वो क्या करता है भी अपने आप को रिसर्च करता है. दूसरी चीज मैंने कई बार देखा, टीचर जब ना, मैं डायरेक्टर प्लेसमेंट भी हूं, मैंने कई बार कहा है, तो ना बच्चों को बेसिक से नहीं पढ़ाते. मैं जब टीचर क्लास में जाता हूं मैं क्या करता हूं, बच्चों को इंप्रेस करने की कोशिश करता हूं. मैं 8वें चैप्टर से शुरू करता हूं जो मेरे को आता है. मैं ये नहीं शुरू करता जो बच्चों को बढ़ाना चाहिए. मेरे मुताबिक बच्चों को बेसिक्स करानी बहुत जरूरी है. आज के टाइम में अगर आप बेसिक्स चीजें बच्चों को नहीं कराते, यू कैन नेवर ग्रो इन द लाइफ. आज के टाइम में मेरे मुताबिक बच्चों को बेसिक्स से कराइए, बच्चों को इंडस्ट्री के साथ लेकर जाइए, प्रॉब्लम्स लेकर आए, और तब तक हम वी कैन नेवर बी नंबर 1 कंट्री. सो आई थिंक मेरे मुताबिक आपको टीचर जब तक मोटिवेटेड नहीं होगा, स्टूडेंट्स कभी मोटिवेट नहीं होंगे. इस करके टीचर शुड ऑलवेज बी मोटिवेटेड. हमारा रोल है टीचर का, वी शुड ऑलवेज बी मोटिवेटेड. और हमें ग्रेटिट्यूड, भगवान का शुक्र करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड करना चाहिए दैट वी हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी. टीचर ही एक ऐसा है जो सोसाइटी में कुछ दे सकता है, वो क्या कर सकता है. और जो एजुकेशन है दैट इज द बेस्ट थिंग वी कैन गिव. और गिफ्ट ऑफ जेनरोसिटी, बी काइंड. आप काइंड होना जरूरी है. एंड देन डोंट हार्म एनीबॉडी, किसी को हार्म ना करें. और सेल्फलेस सर्विस, कोई भी आप काम कर रहे हैं बिना कोई एम के साथ काम करिए. और हैबिट ऑफ माइंडफुलनेस, आप अपने दिमाग लगाकर काम करिए. मैं आपको बताता हूं 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. एक नॉलेज. एज अ टीचर नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम यहाँ पे आए हुए हैं तो मेरे मुताबिक जहां से भी आपको नॉलेज मिलती है जरूर एक्वायर करिए.
क्योंकि आजकल नॉलेज इज पावर। मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर, नॉलेज के अलावा अप्लाइड नॉलेज इज पावर। अगर आपको नॉलेज को अप्लाई करना आ गया तो यू विल फाइंड योर रिजल्ट्स आर टू बी वेरी गुड। सेकंड थिंग इज टीम वर्क। मैंने अपने यहाँ पे कोलैबोरेशन की बात की है। आपको इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, आपको अपने कुलीग्स के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। आज के टाइम में टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इंडिया में क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहे? क्योंकि हमारी कोलैबोरेशन नहीं है। हम एक दूसरे के साथ काम कर ही नहीं सकते, और जब तक हम कोलैबोरेट नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। सो कोलैबोरेशन, इमोशनल क्वोशंट इज टीम वर्क। और तीसरा जो है मॉरल वैल्यूज। वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपनी वैल्यूज अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर जनरेशन हमारी लीडर्स हैं, और मेरे मुताबिक हमें वैल्यूज के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। जो हमारी ट्रेडिशंस है, जो हमारी कल्चर है, वो बच्चों को पास ऑन करनी चाहिए। और चौथा फिजिकल फिटनेस। आपको फिजिकली भी फिट रहना चाहिए। मेरे मुताबिक जो अगर फिजिकली फिट नहीं होगा, दे कैन नेवर बी सक्सेसफुल। और लास्ट थिंग इज स्पिरिचुअल क्वेश्चन। भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है। मैं आपको 5 चीजें बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है। पहले, अगर हम कोई काम फिजिकली करते हैं आउटपुट होती है, पर अगर हम फिजिकल में थोड़ा नॉलेज यूज करते हैं, दिमाग यूज करते हैं, तो आउटपुट डबल हो जाती है। फिजिकली काम कर रहे हैं, नॉलेज के साथ कर रहे हो, टीम वर्क के साथ कर रहे हो, तो नॉलेज क्या हो जाएगा? और हो जाती है। और जब हम फिजिकली कर रहे हैं, कोलैबोरेटली कर रहे हैं, और हम वैल्यूज के साथ कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? वैल्यूज के साथ कर रहे हैं, तो क्या होगा? इट विल बी डबल्ड, मोर देन डबल्ड। और जब हम भगवान का नाम लेकर काम करते हैं तो क्या होगा? यू विल फाइंड द थिंग्स टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरा जो आने का मकसद यही है भी, क्या हम इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट कर रहे हैं अपने आप को? क्या हम अपने बच्चों के बारे में रियली सोच रहे हैं? क्या उनको नॉलेज, स्किल वगैरह दे रहे हैं? ये जो है, जब तक हम ये नहीं करेंगे, मेरे मुताबिक कोई भी एजुकेशन सिस्टम किसी भी जगह का इंप्रूव नहीं होगा। और मैं थोड़ा नाउ आई विल आस्क द क्वेश्चंस बिफोर आई गिव द फाइनल रिजल्ट। आई विल नाउ 10-15 minutes I will ask any question if you want to have. You are most welcome for any. ICT, if you want to ask any questions. Global Institute. सर, आपने जैसे बोला कि सर आपने जैसे बताया था कि पैकेट, सर आपने हाँ जी बोल। हाँ सर आपने बताया था जैसे फैकल्टीज को इंडस्ट्रीज में जाके ट्रेनिंग करनी चाहिए, है ना? ओके सर, कोई ऑनगोइंग प्रोग्राम्स आप बता सकते हैं जो जिसमें हम अप्लाई कर सकें? अभी जो चल रहे हैं कोई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट कैरी आउट कर रही है? देखो, मैं आपको बताता हूँ, आजकल के टाइम में इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट, मैं पूना में था। पूना में वो क्या करते हैं, जो इंडस्ट्री वाले आकर वहाँ पढ़ाते हैं, और लोग वहाँ जाकर, अब हम पंजाब यूनिवर्सिटी में, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, हम क्या कर रहे हैं, 1-2 टीचर्स 5-7 बच्चों को लेकर इंडस्ट्री में जाता है और उसको पूछता भी क्या प्रॉब्लम्स है, और वो प्रॉब्लम्स उसकी जो इंडस्ट्री की होती है वो लेकर आते हैं। फिर वो क्या करते हैं, क्लास में 3-4 टीचर और मिलकर उसको डिस्कस करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, जो टीचर की लर्निंग भी बढ़ती है, क्योंकि जब तक हम इंडस्ट्री के पास नहीं जाएंगे, देखो आज के टाइम में इंडस्ट्री कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें जाना चाहिए भी, आप हमें बताइए भी प्रॉब्लम क्या है, हमें पहले उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए। आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत है, पर हमारी प्रॉब्लम क्या है भी, हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। तो आज के टाइम में प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हमें टीचर्स को वहां भेजना चाहिए। हफ्ते के लिए भेजो, 10 दिन के लिए जाए, और उसका देखो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या कर रहे हैं। जैसे लीन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, 6 सिग्मा कर रहे हैं, काइजन टेक्निक कर रहे हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं। हम अपने यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल में जैसे ऑपरेशन रिसर्च होता है हमारा स्पेशलाइजेशन, हम बच्चों को और टीचर को इंडस्ट्री में भेजते हैं, ताकि वहां देखते भी ऑपरेशन रिसर्च में क्या क्या टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, और वो प्रैक्टिकल के साथ थ्योरेटिकल हम मैच करके हम देखते भी कैसे हम इंप्रूवमेंट कर सकते। दीज इंटरेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट।
हाँ जी, आप जाइए आप बच्चों के साथ। और कोई क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। दूसरे ग्रुप को एनी क्वेश्चंस? SGT यूनिवर्सिटी पूछ रहे हैं। No question, sir. No question. नो क्वेश्चंस? थर्ड को भी कोई क्वेश्चन? Sir, no question. Thank you. SGT. क्या कह रहे हैं? So I think what is important is, चलो ठीक है फिर बंद, ठीक, कोई क्वेश्चन नहीं। So I think learning points are be humbled. Teachers have to be humble in their life. Empowerment, empower your students. New perspective, try to have linkages with industry, try to have linkages with government and industry associations. Live in the moment, live in present. आज के टाइम में जो नीड है, हमें इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट होना ही पड़ेगा। और फिर वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप्स, कोलैबोरेशन करिए, अपने आप जो टीचर्स हैं कोलैबोरेट करिए। और फिर रिसोर्सेज आर लिमिटलेस, रिसोर्सेज बहुत है, ओनली थिंग इज यू हैव टू ड्रीम। मैं आपको बताता हूं, जब तक हम ड्रीम नहीं करेंगे हम कभी भी कुछ अचीव नहीं कर सकते। सो आई थिंक दिस आर माय लर्निंग पॉइंट्स। यू हैव टू कनेक्ट विद द इंडस्ट्री। अगर आपने टीचर ने और इंस्टीट्यूशन ने ग्रो करना है, तो आर वी रेडी टू फॉर दैट। हमें इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है अभी, हम इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट नहीं करते, और उससे क्या होता है, हमारी सारी प्रॉब्लम्स क्या होती है, ऑल द प्रॉब्लम्स आर एग्रीवेटेड। आर यू क्लियर? थैंक यू वेरी मच।